Hello students, welcome to Unacademy platform. This platform provides you daily live classes, structured courses, live test quizzes, and unlimited access on subscription. You can also download Unacademy Learning app, which is available on Google Play as well as Apple App Store. And daily live classes, structured courses, live test quizzes, everything is available in this platform also. Hi Shadna. Okay, this is about me, and this is my Unacademy profile link, and this is my Telegram link. So if you have any doubt, any questions on my lectures, you can ask me any doubt here. Okay, and all your questions will be answered. All your doubts will be answered. Any doubt that you have regarding PSIR preparation, PSIR optional अगर आपका है और अगर आप इसे prepare कर रहे हैं, so you have full guidance here. Okay. Along with me, these are top educators on Academy platform, so you can watch their courses also. Okay. Okay, these are different subscription plans. So if you go with Plus, you have live classes, test series, unlimited practice, and a structured schedule. If you choose Iconic, you also have personal coach, daily means question answer practice, study plan, personalized feedback. Of different plans of different durations which are available, you can select according to your requirement. And again, these rates have changed. So these are new rates, new cost. Okay, and again these are available at 10% discount if you apply this very code, that is Amit PS. Okay, apply this very code in Amit PS and then you will get 10% discount. Okay, coming to our class today. So again, this is going to be a marathon session where I'm going to cover every single issue that is important and that has happened in one policy arena. And the method that I've adopted is the commentaries made by the acknowledged experts of this particular field, that is Indian foreign policy. And this is going to be important from your answer writing point of view, because many things that I'm going to tell here is going to be very important in or you can utilize those things in enriching your answers. Okay, so आप अपने आंसर्स को बहुत enriched कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें जो यहाँ पास बताई जा रही हैं. Many of the statements that I will highlight in my lectures here is going to be very beneficial in making your answers or in adding value to your answers. तो वैल्यू एडिशन का जो पार्ट है, ओके, वो बहुत अच्छे से आपको होगा क्योंकि मैं जो इशूज डिस्कस कर रहा हूँ वो रिसेंट इशूज हैं और जिसको मैं बेसिस बना रहा हूँ अपने डिस्कशन का, वो कौन है? ये एक्सपर्ट्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के. ओके, तो कल मैंने ब्रह्मा चलानी, फिर अमितेंद्र पाटिल, इनके राइटिंग्स को डिस्कस किया और बहुत अच्छा ऐसा मटेरियल आपको मिला होगा जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं. आप जानते हैं कि हर्षदीप पंत इज ऑल्सो एन एक्लेम्ड एक्सपर्ट. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इनके आर्टिकल्स आपको फॉरेन अफेयर्स में मिलेंगे. देन ही ऑल्सो राइट्स फॉरेन अफेयर्स. आप जानते होंगे कि दिस इज द मोस्ट एक्लेम्ड जर्नल इन फॉरेन पॉलिसी इशूज. तो इंडिया के रिस्पेक्ट में वहाँ पास जो इम्पोर्टेंट है मैं वो सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ. देन देर इज अनदर वेरी रिस्पेक्टेड जर्नल दैट इज फॉरेन पॉलिसी. ओके, फिर एक रिस्पेक्टेड जो मैगजीन है वो है द डिप्लोमैट. ओके, तो इनमें जो सबसे अच्छा कंटेंट है उसी को मैंने अपने डिस्कशन का बेस बनाया है. ओके, और यहाँ पास जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज़ें आप यूज करेंगे इन स्कॉलर्स को कोट करते हुए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हर्षदीप पंत एंड योगेश जोशी का ये आर्टिकल है और जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके पूरे बैकग्राउंड को देखें कि ये रीसेंट इशू तो मैं डिस्कस करूंगा ही, इसके बैकग्राउंड को भी मैं दूंगा यहाँ पास. ओके, ताकि आपको रीसेंट इशू अच्छे से समझ में आ जाए. और यही चीज़ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी की है. So if you pay full attention in these lectures, you are going to be benefited a lot. Okay. हाँ, Sadhna Chaurasia have a question. Please ask it.
साधना चौरसिया, आप क्वेश्चन पूछें अपना। फिर हम आगे डिस्कशन में आगे चलते हैं। Okay, Sadhana, you can ask question. Okay, I will see your question and I'll answer it. Okay, so this is a recent issue, and the question that scholar raises here is India overturning its decades of nuclear doctrine? Okay, तो इंडियाज की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अब क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर आप देखें तो that was shaped against the background of 1998 Pokhran 2. Okay, Pokhran 2. जब हमने when we succeeded in detonating the nuclear device and we finally developed the capability of nuclear weapon after testing second time in Pokhran, and that was codenamed as Buddha Smiles Twice. Getting it? So that was codenamed as Buddha Smiles Twice. तो इस बैकग्राउंड में हमने फिर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज की थी. ओके, सो व्हाट वर द फैक्टर्स, what were the factors that compelled India to go for nuclear? तो इसमें बहुत सारे रीजंस थे. फॉर एग्जांपल, इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड was a challenge. ओके, फिर आप दूसरा फैक्टर देखें, इमीडिएट नेबरहुड में आप जानते हैं कि दिस होल पाकिस्तान रीजन, देन चाइना वाज अ बिग फैक्टर. And China was already a nuclear weapon state. Okay, तो यहाँ पास हमें in a way we were compelled to go for nuclear because of our neighborhood that was inimical to India. Okay, and our security concerns were being threatened, or we were directly facing security threats from our neighborhood. लेकिन उस टाइम जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट को जस्टिफाई किया गया था, उसमें चाइना सबसे बड़ा फैक्टर था. आपको ये चीज जान लेनी चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर एस्टैब्लिशमेंट, चाइना वाज द बिगेस्ट फैक्टर दैट कंपेल्ड इंडिया टू गो फॉर न्यूक्लियर. सो इवन अ बिगर फैक्टर देन पाकिस्तान. ओके, so we were not an acknowledged nuclear weapon state. That is something that you know. We are still not a nuclear weapon state. Okay, we are a de facto nuclear weapon state. De facto nuclear weapon state and not de-zero. Okay, हम de facto सेंस में न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जबकि एक्नॉलेज न्यूक्लियर वेपन स्टेट आप जानते हैं दे आर 5 in number. Okay, and they are all part of सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो हमें कुछ जस्टिफिकेशंस देने पड़े कि हम क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, और वो जस्टिफिकेशंस किस कॉन्टेक्स्ट में थे? वो जस्टिफिकेशंस थे हमारे सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट. एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच केम आउट विथ अ क्लियर डॉक्ट्रिन. जैसे पाकिस्तान के केस में आप देखें तो पाकिस्तान की अभी भी कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है. ओके,
मतलब कोई ओपन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। और अब ये मैं आपको उसका बैकग्राउंड देने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये देखिए, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जिसकी जिसकी वजह से या जिसके बैकग्राउंड से आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। तो पहला न्यूक्लियर है कि नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट any country which does not have nuclear weapon। अगर आपके लिए अगर आपके लिए टॉपिक न्यू है तो मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठें, ओके, फिर इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप सीखने वाले हैं। फिर है सेकंड पॉइंट है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। सो नो फर्स्ट यूज इन केस ऑफ वॉर with any country which has nuclear weapon। ओके, तो इसी को बोलते हैं, हेलो साईं यादव चला जी, इसी को बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पास जो है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। ओके, ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है, यहाँ मैंने इस चीज को समझाया है कि इट मीन्स नो फर्स्ट यूज इन केस ऑफ वॉर विथ एनी कंट्री विच हैज न्यूक्लियर वेपन। मतलब और किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया की उससे लड़ाई होती है, तो उस केस में भी इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन। ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स। गेटिंग इट? अब ये पर्टिकुलर पॉलिसी बहुत बार क्रिटिसाइज की गई है। सो देयर इज a scholar by this very name Bharat Karnad। Okay, he is one of the realist thinker that we have in India। और भरत करनाथ की बहुत अच्छी एनालिसिस आपको RSTV डिस्कशंस में भी मिलेगी। मतलब समटाइम्स ही इज इनवाइटेड इन दिस डिस्कशंस। आप इस नाम को सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। ओके, अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है, उसको आप इफ यू वांट यू कैन रीड ऑल्सो। द नेम ऑफ द बुक इज व्हाई इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर येट। ओके, ठीक है। इनका ये कहना है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक रिडंडेंट, एक अननेसेसरी एलिमेंट है आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। और जो रीजनिंग वो देते हैं भरत करनाथ, वो ये है कि इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर द डिवास्टेशन caused by nuclear weapon would be so much that there is no use of any second strike capability। ओके, मतलब होता क्या है कि न्यूक्लियर वेपन, भरत करनाथ कह रहे हैं कि अगर अब ये पॉलिसी रख रहे हैं नो फर्स्ट यूज की, और जिसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री के साथ जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन रखती है उसके साथ अगर आपकी फाइट होती है, उसके साथ आपका वॉर होता है, और उसमें आपका अगर पॉलिसी ये है कि आप पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू यूज न्यूक्लियर वेपन, देन इट वुड मीन दैट वंस you survive a nuclear attack and then you are thinking of attacking that country with a nuclear weapon, but now because if you face any nuclear attack by any nuclear weapon state, then the devastation caused by that particular attack will be so much that it is of no use to strike back, or it will be this will make country incapable of striking back with nuclear weapon। Okay, so there is something called second strike capability, and according to Bharat Karnad, this is something which is not relevant. There is no point in surviving any nuclear attack
Okay, or there is no point in facing any nuclear attack and then thinking that we are going to revert back, okay, by our nuclear attack. ये मतलब यहाँ पास भरत करनाल का है, मतलब वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट. हेलो हाय, और आप मैं कहूँगा आपसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो हाय प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, बिकॉज वो आपको मदद करेंगे ज़्यादा. ठीक है. हाँ, हाय सुमन, बट आई विल इंसिस्ट ऑन क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. और आप ट्राई करें कि इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये एक रिसेंट इशू है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और सारे के सारे कंटेंट यहाँ पास इशू और कंटेंट सारे के सारे नए हैं. तो आप इसमें फोकस करें कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएं. हाय हेलो हो चुका है, अभी क्लास स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए हैं. ठीक है, इसमें आप ट्राई करें कि यहाँ पास कंसंट्रेट करने की कोशिश करें और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें, सो दैट वी कुड मेक अवर डिस्कशन मीनिंगफुल. ओके, तो आपने इसको नो फर्स्ट यूज को समझा. ठीक है, कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इंडिया की, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों वो क्रिटिसाइज की जाती है. ओके, आप इसके रेलेवेंस को और भी समझें कि इंडिया, व्हाई इंडिया केप्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, बिकॉज इंडियाज attempt to develop nuclear weapon was being subverted continuously by global powers like USA. USA इसमें लीड में था. तो फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ mechanism that prevailed at international level to prevent any country from developing any nuclear weapon was consisted of groupings like NSG, nuclear supply group, and then there was a provision of nuclear non-proliferation treaty NPT. तो ये सारी चीजें थी, मतलब they were framed with this purpose of restricting any country to be able to develop nuclear weapon other than those 5 states which were already capable of striking with any nuclear weapon, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं. ओके, तो ये चीज था कि इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में था जिसको कई सारे अटेम्प्ट करके, कई सारी ग्रुपिंग्स क्रिएट करके, इस तरह की ट्रीटीज को जनरेट करके रोका जा रहा था कि इंडिया कुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन. बट इवन देन विदाउट एनी फॉरेन assistance, India could develop nuclear weapon. Okay, India succeeded in developing the nuclear weapon on its own, completely on its own. So credit goes to our scientific community there. Okay, so this is the background, and that is why Indian foreign policy establishment was so much careful about coming out with this kind of doctrine, which could justifyably put India's position clear in front of global community, and will be able to convince them that India actually requires, or India requires this kind of capability to resolve the security concerns that it faces in its neighborhood. Okay, so that was the attempt here. और इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए. फिर और भी पॉइंट्स है आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, और वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन स्टेट ओनली अगेन a nuclear weapon, we will use nuclear weapons only against a nuclear weapon state or any country which has the capability of striking India with any nuclear weapon. That is one. Then no use, मैंने जैसा कि बताया कि पहले भी, no use against any country which does not have any nuclear weapon. सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ किया जा रहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में. ओके, तो इस बैकग्राउंड के साथ आप इस चीज़ को समझेंगे जो मैं भी समझाने जा रहा हूँ. Okay, so let us start now. This is the whole background. If you have any questions on this background, you can ask me. I am focusing on this particular content that I have chosen for you, and briefly I will discuss about the background so that we could give proper time to the current issue that is there. Okay, in a statement to the Conference on Disarmament on October 14, Indian Ambassador Pankaj Sharma reiterated that even as tensions with the neighboring China heat up, his country remains committed to its doctrine that it will not use its nuclear weapons against an adversary unless first attacked with them. Okay, तो पंकज शर्मा ने यहाँ पास क्लियर किया कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में which was held in October 14th कि इंडिया even if
it is coming in conflict with a nuclear weapon state, that is China here in this case, is not going to attack it. Okay, firstly, okay, by any nuclear weapon. That means what? India, according to Pankaj Sharma, that is Indian ambassador, addressing the conference on disarmament, says that India is going to continue its policy of no first use. Okay, आगे देखिए, India's adherence to no first use principle is long standing. Here, Harsh Vipant is saying that it has come a long way now. Okay, ever since 1998. What is so special about 1998? This is the year when we went for Pokhran 2. जहाँ हम this is the year when we were successful in detonating a nuclear device. That means finally becoming capable of developing the nuclear weapon. When the country went nuclear, this is the year when India went nuclear. New Delhi has rejected the idea of initiating the use of such weapons in any conflict scenario. लगातार इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये एक फर्म बिलीफ रहा है, फर्म स्टैंड रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्राइक एनी कंट्री, बी इट न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बी इट अ कंट्री with a nuclear capability or without it nuclear capability. We are not going to strike that country with nuclear weapon state with nuclear weapon firstly. Okay, so in the first place we are not going to use nuclear weapon even against a country which is capable of attacking India with any nuclear weapon. Nukes in Indian strategy are purely retaliatory. मतलब क्या है कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के केस में क्या है, रिटेलिएशन में यूज किए जाएंगे. दे विल बी यूज ओनली इन रिटेलिएशन. मतलब अगर हमारे ऊपर किसी ने स्ट्राइक किया तो रिटेलिएट हम करेंगे. ओके, तो अगर आप याद करें तो देयर इज अनदर facet of this particular nuclear doctrine which was made clear by your Prime Minister Vajpayee in Indian Parliament, and that was this, that the purpose of developing nuclear weapons capability for India is to develop credible minimum deterrence. Credible minimum deterrence, CMD. This was the purpose. Okay, the sole purpose of developing nuclear weapon for India. So for India, this was the sole purpose of developing the nuclear weapon. Getting it? And this was made clear by your Prime Minister Vajpayee. Okay. In Indian Parliament, उनका अभी भी YouTube में speech मिल जाएगा आपको. If you go to Parliament, if you go to YouTube, and you will find this particular video. तो इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने एड्रेस किया था कि इंडियाज attempt or India's successful attempt in detonating a nuclear device in Pokhran 2. The purpose here is to develop the new credible minimum deterrence. What is the meaning of credible minimum deterrence? कि हम deterrence पैदा करना चाहते हैं. ओके, किन के लिए? उन स्टेट्स के लिए जो हमको थ्रेट्स पोज करते हैं, उनके अगेंस्ट हम डेटर्स, उनको हम डेटर करना चाहते हैं. और वो डेटरेंस की एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हमने वेपन डेवलप किया है. और ये डेटरेंस ऐसा नहीं है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश एनी हेजेमनी. Okay, the deterrence here is not to establish any hegemony or Indian hegemony in the region or anywhere, any part of the world. It is there so that we could safeguard our interest, or so that we could resolve our security concerns that we have in our neighborhood. Okay, आगे देखिए. Nukes in Indian strategy are purely retaliatory. मतलब कि यहाँ पास retaliation में उसे use किया जाना है. And that stance has made good military and diplomatic sense. That stance has made good military and diplomatic sense. आगे देखिए. अच्छा, good military and diplomatic sense का क्या मतलब है यहाँ पास?
Good military sense because there is credible minimum deterrence now. Okay, any country with nuclear weapon capability will think twice in attacking India with any nuclear weapon because India can retaliate with nuclear weapon. Okay, why it makes a good diplomatic sense because of this nuclear doctrine that we have, and where we have this clear policy of no first use. India and its diplomatic efforts could very well establish that India's attempt to go for nuclear is not guided by any desire to establish hegemony in the region, but is purely motivated by its security concerns that it has in its neighborhood. So that is the main purpose here. ओके तो उसके पहले हुआ क्या, दिस इज एक्चुअली द कॉन्टेक्स्ट. आप समझिए कि 1998 में जब हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सफल हुए तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या था. वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि बिफोर दैट वेरी पीरियड आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो देयर इज 1991, द ईयर विच saw the disintegration of USSR. Okay, and USSR, you know that it was the most trusted ally of India. But disintegration saw Russia emerging as the inheritor state of USSR. Okay, you know that in the year 1971 we had a treaty of friendship with USSR. But Russia, which was the inheritor state of USSR, first, it was not equally powerful as was the case with USSR. Second, it was having various domestic compulsions to go behind powers like USA and other Western European countries for its own economic development. Third, it did not share the similar resolve that we saw in case of USSR with respect to friendship to India, and that is why it also led to the revision of treaty of friendship that we signed with USSR in the 1971. And that revision of treaty actually deleted the clause, that particular clause that existed in that particular treaty, which ensured or which kind of guaranteed India's security in case of any foreign attack. Okay, तो यहाँ पास मतलब ये था कि 1991 में बहुत रिमार्केबल चेंजेस आ गए और नेट रिजल्ट ये था कि उसके बाद हम जानते हैं कि डोमेस्टिक केसेस में भी वेंट फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स हियर आल्सो. So systemic factors, domestic factors all contributed in changing the course of India's foreign policy, whereby it was adopting more and more capitalist approach domestically and was also changing the set of allies and friends that it had at international level, whereby it was approaching towards USA, okay, closer and closer. So here we started getting attention from USA, and because of LPG reforms that we brought about in our domestic front, USA was also looking India in terms of a market. This was also a decade where in international politics, geoeconomics was replacing geopolitics so far as any factor contributing in the development of any foreign policy is concerned. And because of the dominance of geoeconomic factors, and also because of the large presence of Indian diaspora in USA, we came closer and closer with USA as a country. That is one. Okay. इसके बाद हुआ क्या कि we started developing good relations with USA. That is the background here. A country, USA was a country which was hell bent in restricting India from developing nuclear capability. But without any foreign assistance, when we developed nuclear weapon in the year 1998, we attracted sanctions from USA and its allies that included countries like Japan also. Okay, तो इसमें यहाँ पास बहुत सारे फैक्टर्स थे जो बहुत सारी चीजों को फंडामेंटली चेंज कर रहे थे. ओके, अब यहाँ पास हुआ क्या कि जब हम यह न्यूक्लियर वेपन डिवाइस डेटोनेट करने में कैपेबल रहे तो वहां पास हमें सैंक्शंस फेस करना पड़ा. ओके, अब ये जो ग्लोबल सिचुएशन हुई दैट वाज नॉट फेवरेबल टू इंडियाज इंटरेस्ट. तब हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लेने पड़े ताकि हम अपनी पोजीशन को अच्छे से समझा पाए.
ओके। और इसीलिए ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारे लिए डिप्लोमेटिक सेंस में भी बहुत अच्छी रही, और हमने बहुत जस्टिफाई कर दिया इस चीज को कि हाँ हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। उसका नेट इफेक्ट क्या था? उसका नेट इफेक्ट क्या था कि फिर वो सैंक्शंस जो हमारे यहाँ हमारे ऊपर इम्पोज किए गए थे, वो सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए। ओके, आगे देखिए। द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ इंडियाज आर्सेनल ruled out a first strike anyway, and the country's commitment to restraint, meanwhile, built its image as a responsible nuclear stakeholder and helped ease New Delhi's accommodation in the international nuclear order. अब यहाँ पास first viewpoint is of the view that India had very small size of arsenal, okay, and that itself was a factor why India did not have first strike policy, and in a way he means that India did not have first strike capability also. But the second point is even more important, where he says that this no first use policy built India's image as a responsible nuclear power. ओके, इससे हमको मदद क्या मिली कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। समझे आप इस बात को? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कि वी कुड शो आवर सेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। अब आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन हियर दैट व्हाट इज द यूज ऑफ शोकेसिंग आवर सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर? इसका क्या मतलब होगा? हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ अगर हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर दिखा पा रहे हैं? तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आप जो देखेंगे वो है कि वी वर सक्सेसफुल इन क्रैकिंग द सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील विथ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन हुई यूएसए के साथ, जिसके लिए यूएसए ने अपने डोमेस्टिक लॉ में अमेंडमेंट भी करना पड़ा, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह प्रोजेक्ट कर पाए थे, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। ओके, फिर एक चीज और देखिए कि इट इज नॉट ओनली अबाउट सिविल न्यूक्लियर डील विथ यूएसए। आफ्टरवर्ड्स इन लास्ट 4-5 years, we have seen that India has successfully concluded similar deals with other countries also. And the toughest country in this particular area to deal with was Japan. Okay, एक्चुअली है क्या कि जापान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जापान के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज द ओनली कंट्री विच हैज सर्वाइव्ड अ न्यूक्लियर अटैक, यू नो दैट हैपेंड ओके ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिरोशिमा नागासाकी का केस आप जानते हैं। अब हुआ क्या था यहाँ पास कि because of the complete devastation that was caused to Japanese economy, okay, when Hiroshima and Nagasaki were bombed with nuclear weapon, उनका पूरा का पूरा एटीट्यूड जो था वो चेंज हुआ, and the Japan that we saw after that particular attack was a completely different country. Before the Second World War, it was one of the imperial power that we had in India, and during that time it was a single imperial power in India. It has also successfully defeated country like Russia earlier. Okay, so Asian turf में आप देखेंगे तो this was one single imperial power that we had in Asia. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान completely changed its domestic policy with respect to war. Okay, and to a significant state, it became a pacifist state. Pacifist state. What is the meaning of pacifist state here?
पैसिफिक स्टेट का मतलब कि यहाँ पास इसने बहुत सारे प्रोविजंस अपने बजट और अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में ऐसे इंसर्ट किए जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जापान इज नॉट गोइंग टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट और इन वॉर with any country in foreseeable future except in case of self-defense. Okay, so there are various provisions in Japan in its domestic and foreign policy, in many of its legislations, where it is restricted by the constitutional design and also by various other legislations that were passed after the Second World War, that it is restricted from using force except in case of self-defense. It goes to the extent that Japan will not be able to help even its allies if they develop any kind of friction with any other country. If Japan requires to send its troop abroad. मतलब क्या है कि अगर जापान को जरूरत पड़ी कि उसे अपनी ट्रूप्स को अब्रॉड भेजना पड़ेगा, तो उस केस में वो अपने एलीज की मदद के लिए भी फोर्स को यूज नहीं कर सकता। तो जापानीज जो फोर्सेस हैं वो फॉरेन टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में जा सकती हैं, उसके पहले नहीं जा सकती। ओके, तो इतनी पैसिफिस्ट कंट्री के बाद भी अब इसका ये एटीट्यूड भी जस्टिफिएबल है, ये एटीट्यूड भी समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ लोन पावर विच हैज सर्वाइव्ड इन न्यूक्लियर अटैक। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो आप ये समझें कि इस कंट्री के साथ भी हम न्यूक्लियर डील साइन करने में सक्सेसफुल रहे। ओके, दैट हैपेंड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जापान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज जापानीज कंपनीज मेक सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज बिल्ट बाय एनी अदर कंट्री। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस वगैरह का केस अगर आप छोड़ दें, फ्रांस नहीं, रशिया का केस अगर आप छोड़ दें, तो जापानीज कंपनीज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स डिजाइन करती हैं जो ऑलमोस्ट हर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं, भले वो न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा हो। तो जापान के साथ भी न्यूक्लियर डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हम उससे भी न्यूक्लियर डील साइन करवाने में सक्सेसफुल रहे। एक्चुअली हुआ होता क्या है कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेचरी टू एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इंडिया इज नॉट अ सिग्नेचरी टू एनपीटी and that is a condition that these countries have if they go for any kind of civil nuclear cooperation with any country. तो इंडिया एनपीटी को साइन कर नहीं रखा है, इसलिए इंडिया उन कंट्रीज में है जिनके साथ ये कंट्रीज जापान की वजह से न्यूक्लियर डील साइन नहीं करती। लेकिन इंडिया इज अ lone example, or it is a unique example, that it is a country which has not been a signatory to NPT, but even then has been successful in finalizing nuclear deals for civil nuclear cooperation with countries like USA and Japan. तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल ऐसे हुआ कि इंडिया है एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाया। और उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? अगेन, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, आगे देखिए। बट इंडिया स्टेडफास्ट रेटोरिकल adherence to its no first use principle has been facing challenge on multiple fronts. But Harshvi Pant is of the opinion that this particular policy that we have in form of no first use policy is facing a challenge from multiple fronts. Now, what are these challenges? First, there is growing consensus in the Western non-proliferation community that in practice New Delhi has already nearly relinquished this policy. ओके, तो वेस्टर्न नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी में कौन आता है? मतलब यहाँ पास अकॉर्डिंग टू हर्षवी पंत एक ऐसा ग्रोइंग कंसेंसस बन रहा है कहाँ पास? वेस्टर्न नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी में, कि इंडिया हैज ऑलरेडी रिलिंक्विश्ड इट्स पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज।
ओके, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रिलिंक्विश कर दी है, गिव अप कर दिया है उसको। ये एक कंसेंसस बन रहा है कहाँ पास, वेस्टर्न नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी में। और यहाँ पास वेस्टर्न नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं वो है नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, इन नॉर्डिक कंट्रीज को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हार्ड लाइनर्स। ठीक है, तो हम जब मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स का हिस्सा बनने जा रहे थे, ओके, those multilateral groups which trade in nuclear items and dual use technology, उस टाइम हमारी तरफ से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया जा रहा था कि ये नॉर्डिक कंट्रीज और वेस्टर्न नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी लॉबी है, जिस जो इतना नॉन प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करती है कि उसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हार्ड लाइनर्स बोला जाता है, उनको कन्विंस करने के लिए हमारी लीडरशिप ने बहुत ट्राई किया, और जिसमें प्रेसिडेंशियल लेवल में विजिट्स हुई हैं। ओके, तो इफ यू गो बैक टू द ईयर 2015-16, मतलब we have made extensive efforts in convincing these Nordic countries and other countries in Western non-proliferation community that we could have access to those multilateral groups which trade in nuclear technology and dual use technology. Okay, आप MTCR group, SNR arrangement, इन सब के बारे में आप जानते हैं। Okay, in fact, experts believe that should India and Pakistan go to war, India would ready its nuclear force for preemptive strikes। मतलब यहाँ पास कुछ एक्सपर्ट्स का, हर्षवी पंत का व्यू है कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये ओपिनियन रखते हैं कि अगर इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ तो पाकिस्तान के केस में इंडिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए, प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहेगा। प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए तैयार रहने का मतलब ये है कि इंडिया विल बी रेडी टू स्ट्राइक विद न्यूक्लियर वेपन फर्स्टली, ओके, बिफोर पाकिस्तान strikes India. Okay, and it has acquired the capability, nuclear arsenal, delivery system, and intelligence, surveillance, and reconnaissance system to do so. मतलब कि यहाँ पास earlier Harshvi Pant was of the view that the no first use policy was not just a diplomatic um, overture. It was not just a diplomatic step. India was not capable with first strike capability. Okay, India was not having this first strike capability, and that also, in a way, necessitated the adoption of no first use policy. But now Harshvi Pant is saying that India has successfully acquired the capability of nuclear arsenal, delivery system, intelligence, surveillance, and reconnaissance system to do so. To do what? To strike firstly. Okay, to go for nuclear preemptive strike. मतलब कि पहले स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी, पहले न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। आगे देखिए, मोर ओवर having already been granted recognition of its right to a nuclear program through 2005 India-US nuclear deal, New Delhi has less incentive for caution। अच्छा, यहाँ पास हर्ष बी पंत is of the opinion that in a way India has already been granted the recognition of its right to a nuclear program, and that is happening because of the successful cracking or conclusion of 2005 Indo-US nuclear deal, जिसको मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि why Harshvi Pant is saying that in a way India has been granted a recognition, because what happens that if a country signs nuclear non-proliferation treaty, then it is ensured that that particular country which becomes a signatory of NPT is not going to develop nuclear weapon। ओके, मतलब ये कहा भी जाता है कि एनपीटी क्या है, एनपीटी न्यूक्लियर वेपन के हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोकती है। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप प्लीज टाइम लगा के समझें। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं 5, ओके, अगर कोई और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है तो हॉरिजॉन्टल वे में दूसरे न्यूक्लियर
दूसरे कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन जाएंगी। एनपीटी इंश्योर करती है कि सारी कंट्रीज एक्सेप्ट दीज 5 powers that have already developed nuclear weapons and are acknowledged as nuclear weapon states. Those other countries could not develop nuclear weapon. और इसी वजह से कहा जाता है कि एनपीटी ensures that there is no horizontal proliferation. But NPT does not have any mechanism to ensure vertical proliferation. Okay, to restrict vertical proliferation. मतलब यहाँ क्या है कि जो 5 कंट्रीज हैं जिनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला जा रहा है, they can go on increasing their nuclear stockpile, and that is something that NPT does not restrict, does not curtail. हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का मतलब है कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनके अलावा कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना कर पाए। अगर ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन नहीं होगा, और एनपीटी इसी में फोकस कर रही है। एनपीटी में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत ये इंश्योर किया जा सके कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रख रहे हैं, वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और ज्यादा बिल्ड ना करें या उसे खत्म करें। ऐसा कोई प्रोविजन एनपीटी नहीं डिजाइन करके देती। Okay, actually, this is the problem. This is one of the major contention that India has with signing of NPT. मतलब कि लगातार जो प्रेशर बन रहा था, और बहुत हद तक कभी कभी आज भी हो जाता है प्रेशर कई कंट्रीज के द्वारा, कि स्पेशली बाय न्यूक्लियर नॉन proliferation hardliners that I already told you about, and those are mainly Nordic countries in Western Europe. तो मेन कंटेंशन इंडिया का इस कॉन्टेक्स्ट में यही है कि एनपीटी is checking only horizontal proliferation and it is not curtailing vertical proliferation. Or India stands for an all-out nuclear disarmament, time-bound all-out nuclear disarmament. वो एनपीटी नहीं कर रही है। तो हम हमारा रीजनिंग क्या है, हम क्या लॉजिक देते हैं कि हम एनपीटी क्यों नहीं साइन करेंगे। हम ये लॉजिक देते हैं कि इंडिया इज नॉट एबल टू एनपीटी इज नॉट एबल टू curtail vertical proliferation, whereas India stands for all out time bound nuclear non-proliferation and not selective non-proliferation. हमारी तरफ से क्या है कि एनपीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, क्योंकि एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को किसी भी तरह की रोक नहीं लगाती कि वो अपने स्टॉक पाइल्स को ना बढ़ाएं या फिर अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। ओके, तो हमने एनपीटी साइन नहीं किया था। जब कंट्री एनपीटी साइन करती है तो एक तरह से गारंटी हो जाती है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन्स के इस्तेमाल के लिए नहीं यूज करेगी। तो उस केस में उसे सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन मिलता है, किसका? इन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का, और अदर मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स दैट वी हैव एट ग्लोबल लेवल टू इंश्योर न्यूक्लियर ट्रेड। ओके, अब वो चीज क्या है, वो यहां पास उन्हीं कंट्रीज को मिलेगी जो एनपीटी साइन करती हैं। लेकिन इंडिया के केस में एक स्पेशल एक्सेप्शन जो मेंटेन किया गया था वो ये था कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू साइन एनपीटी। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपनी सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स को अलग करना पड़ेगा, और कॉपरेशन किसके लिए होगा? सिविल न्यूक्लियर साइट्स के लिए, और जिनको IAEA के सुपरविजन में रखना होगा। क्यों सुपरविजन में रखना होगा? कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए ने डील साइन की इंडिया से, ओके, सिविल न्यूक्लियर डील, तो यूएसए टेक्नोलॉजी देगा और सारा कुछ देगा जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल सेंस में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर सकें। लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी होती है, तो एक डर होता है कि उस टेक्नोलॉजी को रखने वाला कंट्री अगर किसी तरह से उससे कॉपरेशन किया जाए जिसके तहत वो कंट्री को इस ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाए, वो कहीं इस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री सेंस में या मिलिट्री फील्ड में यूज ना करने लग जाए, मतलब कि उससे वेपन ना डेवलप करने लग जाए। इसीलिए उन साइट्स को इंडिया ने
इंडिया को आईएईए के सुपरविजन में रखना पड़ा, ताकि इंडिया वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी जो उसे सिविल न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ करने में मिल रही है, उसे ये इंश्योर किया जा सके कि इंडिया उसे मिलिट्री के लिए यूज नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन आईएईए के सुपरविजन में कौन सी साइट्स होंगी? वो साइट्स होंगी जो यहाँ पास सिविल कॉपरेशन के लिए, सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। मतलब कि एक तरह से ये टैसिट एक्सेप्टेंस है कि इंडिया विल कैरी ऑन विथ इट्स military nuclear sites, or those nuclear sites which are dedicated for military use, that is which are dedicated for developing nuclear weapon. समझ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास मतलब ये है कि ये कैसे एक रिकॉग्निशन ग्रांट की जा रही है। तो ये इस सेंस में रिकॉग्निशन ग्रांट की जा रही है कि भाई हमारे पास, जब हमने यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, तो यूएसए जिन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज कर पाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डुअल यूज है, जिसका मतलब होता है कि वो टेक्नोलॉजी वेपन्स के कंस्ट्रक्शन में भी और वेपन्स के डेवलपमेंट में भी यूज की जा सकती है। इसलिए हर उस न्यूक्लियर साइट को जहां पास न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल पर्पस के लिए यूज होना है, उसे आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में रखा जाएगा। लेकिन इंडिया कंपेल नहीं किया गया अपनी दूसरी न्यूक्लियर साइट्स को आईएईए के सुपरविजन में रखने के लिए। मतलब कि इंडिया कैन हैव अ सेपरेट क्लास और सेपरेट प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियर साइट्स completely dedicated for its military use, that is for the development of nuclear weapon. ओके, तो मतलब क्या है, एक तरह से एक रिकॉग्निशन है कि इंडिया विल कैरी ऑन विथ इट्स वर्क ऑफ डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन और इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, even though on its own, without using any technology that has been transferred by any country as part of nuclear deal that India has signed with that particular country. Okay, so in a way it is going to recognize, this mechanism is going to recognize India's right for a nuclear program. Okay, so moreover, having already granted recognition of its right to a nuclear program through the 2005 Indo-US nuclear deal, New Delhi has less incentive for caution. मतलब पुष्पेश, I'm sorry, Harsh V. Pant is of the opinion that now there are less incentives for caution because India has already received the recognition of its right to a nuclear program by the nuclear deal that was concluded in the year 2004-2005 with USA. Okay, second factor क्या है? China and India are embroiled in a military scuffling. आप जानते हैं गलवान वैली लद्दाख के एरिया में the tussle that actually is going on between India and China. Scuffling in the western Himalayas, where the Chinese army had sliced off significant chunks of Indian territory. Okay, so this is actually referring to the events that took place and the conflict that is going on to a good extent in Galwan Valley. Given the disparity between New Delhi's conventional military power and Beijing's conventional military power की अगर बात करें तो Beijing is much ahead than New Delhi. If you go by the reports, publicly adopting a first use doctrine would communicate both power and resolve on India's part. Okay, मतलब कि यहाँ पास डिस्पैरिटी जो एग्जिस्ट करती है किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। किस सेंस में? कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में। इस केस में अगर फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को पब्लिकली अडॉप्ट किया जाएगा, तब हर्ष वी पंत कह रहे हैं कि दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ पावर एंड रिजॉल्व। पावर किस चीज का? कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है फर्स्ट स्ट्राइक की, और रिजॉल्व का मतलब क्या है? कि यहाँ पास दिखाया जाएगा कि वी आर नॉट गोइंग टू बी कोड डाउन बाय बीजिंग, ओके, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन अवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो ये चीज यहाँ पास कही जा रही है। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स, this would be an opportune time for India to align its stated policy with its apparent intentions.
ठीक है। तो मतलब क्या है कि दिस वुड बी एन अपॉर्चून टाइम फॉर इंडिया टू अलाइन इट्स स्टेटेड पॉलिसी विथ इट्स अपरेंट इंटेंशंस। तो यहाँ पास क्या है कि दिस वुड बी अ गुड टाइम वेयर इंडिया अपनी स्टेटेड पॉलिसी को अपने इंटेंशन से अलाइन करता है। ओके, इंटेंशंस क्या है यहाँ पास? इंटेंशंस है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, और स्टेटेड पॉलिसी क्या होगी अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को इंडिया रिलिंक्विश करता है? ठीक है। शर्मा's message though amounts to a categorical rejection of both pacts। तो शर्मा जो अभी आपने देखा यहाँ पास कि पंकज शर्मा का स्टेटमेंट था कि इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। Harsh Pant is of the opinion that this Sharma's message that India is going to continue with no first use policy is going to be a categorical rejection of both pacts. Both pacts मतलब first pact and this is the second pact. Okay, the essential puzzle in India's nuclear policy therefore boils down to the following. Okay, and what is that? If Indian intentions and capability to initiate first use of nuclear weapon have indeed shifted, why is New Delhi hesitant about leveraging this shift where it may matter most against China? मतलब ये है कि यहाँ पास प्रॉब्लम ये है या क्वेश्चन ये उठ रहा है कि if India has developed this capability of first use or first strike, first nuclear strike, or you can say preemptive nuclear strike, then why India is hesitating in declaring the same or using this particular capability where it is needed most, that is in the conflict, ongoing conflict that we have with China? Or why it is the most useful in this particular context? Only because there is a kind of disparity, a huge disparity that exists in the conventional military power between China and India. तो इस केस में हर्षवी पंत ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिया ने वाकई फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है और वो कैपेबल है फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक में, और तब ये इसे क्यों नहीं लेवरेज कर रहा है, क्यों नहीं इसे यूटिलाइज कर रहा है एटलीस्ट इन इट्स पॉलिसी इंस्टेंस, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत किस कॉन्टेक्स्ट में है? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट दैट इज देयर इन विद रिस्पेक्ट टू चाइना। आगे देखिए, its states do have an incentive to hide new military capabilities, है ना? यहाँ पे this is one of the reality of international politics that they have incentives to hide new military capabilities only because they want to keep other states ignorant about their real capability. The no first use doctrine may simply be a public lie to hide private intentions. So Harshvi Pant is of the opinion that India's no first use policy is nothing but a public lie to hide the private intentions. And what is the private intentions? That India is completely ready for preemptive nuclear strike, and that goes with the developing consensus in Western non-proliferation community that India has already changed nuclear no first use policy and will be ready to use it in skirmishes that it develops with countries like Pakistan. Okay. However, backing away from the principle would also signal strength and perhaps make it less likely that India would need to use its new military capabilities to begin with. लेकिन हर्षवी पंत कह रहे हैं कि अगर इस प्रिंसिपल से बैक किया जाए, ओके, इफ वी डू बैकिंग अवे फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, देन इट वो ये क्या होगा कि अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से अगर हम
बैक करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया विल नॉट बी pursuing its no first use policy anymore, that would mean what? That would mean that this is going to project strength. ओके, और हो सकता है कि अभी फिर से इसकी जरूरत भी ना पड़े। मतलब कि अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से हम चेंज करते हैं कि नाउ इंडिया इज रेडी टू गो फॉर फर्स्ट स्ट्राइक, फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक और प्रिएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दिस विल शोकेस इंडियाज स्ट्रेंथ एंड पावर। इससे इंडिया की स्ट्रेंथ और पावर पता चलेगा। और दूसरा फैक्ट क्या है, वो और भी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि इस पॉलिसी को चेंज करने के बाद हमें फिर जरूरत ही ना पड़े कि हम फर्स्ट स्ट्राइक करें। ओके, दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग। आगे देखिए, another explanation is that India doesn't think it needs the added deterrence. Yes, see, these are all the viewpoints that you should take note of in order to write good answers. So now Harshvipanth is of the opinion that another explanation that is possible here is this, that India initially went for credible minimum deterrence in its foreign policy. Now, if it has been successful in developing the capability of preemptive nuclear strike, maybe that it does not need any addition in its credible minimum deterrence policy. मतलब कि ऑलरेडी एक डेटरेंस डेवलप हो चुका है और उसको अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मतलब है यहां पास। आगे देखिए, however backing away from the principle would also next देखिए, so far New Delhi has opted for a conventional build-up along the border with China. अब देखते हैं कि अभी तक जितनी स्कर्मिशेस थी, जितनी फाइट्स अभी चल रही थी, ऑनलाइन फाइट जो थी, उसमें मेनली क्या हुआ है, उसमें मेनली कन्वेंशनल चीजें हैं, कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है जिसको मोबिलाइज किया गया है अलोंग द बॉर्डर। ओके, एंड नो मूवमेंट्स विथ रिगार्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक, but that has put enormous strain on its under-equipped and overstressed armed forces as well as its underperforming economy. अब यहाँ पास अगर बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल बिल्डअप, मतलब कि कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फोर्सेस, कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ मोबिलाइज किया गया है बॉर्डर में। इससे क्या है, इससे स्ट्रेन पड़ता है किसमें, अंडर इक्विप्ड और ओवर स्ट्रेस्ड आर्म फोर्सेस में। तो वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड है। फॉर एग्जांपल, दे हैव टू बी दे शुड बी गाइडिंग एलओसी, आई एम सॉरी, लाइन ऑफ एक्चुअल एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, देन अदर बॉर्डर एरियाज विद पाकिस्तान, then they are present in many areas of Jammu and Kashmir also, to ensure that no infiltration takes place and also to avoid any kind of foreseeable terrorist attack that is possible in these areas. तो बहुत सारे काम पहले से ही आर्म फोर्सेस के, और उस केस में अगर न्यू दिल्ली कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप को चूज करता है along the border with China, तो उसमें ऑलरेडी जो अंडर इक्विप्ड और ओवर स्ट्रेस्ड आर्म फोर्सेस है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग। अब जानते हैं कि इंडिया हैज टेक्निकली एंटर्ड इनटू रिसेशन। ओके, तो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। तो रिसेशन फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी अंडर इक्विप्ड है और उनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है। उस केस में चाइना को डिटर करने के लिए अगर कन्वेंशनल बिल्डअप किया जाएगा बॉर्डर में, इंस्टेड ऑफ
डेटरिंग चाइना विथ एनी न्यूक्लियर फोर्स, तो वो अच्छा नहीं है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं है, हर्षवी पंत का ये कहना है। ओके, डिप्लोमेटिकली टू बिल्डिंग अ कन्वेंशनल डिफरेंस हैज बीन कॉस्टली, और डिप्लोमेटिक सेंस में भी कन्वेंशनल डिफरेंस मतलब कि न्यूक्लियर नहीं, कन्वेंशनल वॉर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूक्लियर वेपन उसमें यूज नहीं होते, उसमें तो बंदूकें ये सारी यूज होती हैं। तो अगर वो डिफरेंस यहाँ पास यूज किया जा रहा है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, बॉर्डर में, तो वो डिप्लोमेटिक सेंस में भी अच्छा नहीं। ओके, आगे देखिए, मेजर्स सच एज इनवाइटिंग ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन naval exercises in Malabar and initiating official trade talks with Taiwan rattled Beijing, but not much more. आप जानते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया, ओके, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में, और फिर ऑफिशियल ट्रेड टॉक्स विद ताइवान। अब ताइवान जानते हैं कि whenever India approaches Taiwan, that is something which has been problematic to China. So China has been against this kind of closeness that India tries to develop with Taiwan. Okay, then it starts uh, using certain other levers to pressurize India to relinquish its relation with Taiwan. Okay, और टू डील विथ ताइवान थ्रू चाइना रूट, मतलब इसका एम्फेसिस ऐसा रहता है। लेकिन ये सारी चीजें इंडिया बीजिंग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं की है। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिकली भी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। क्या? कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर दैट हैज बीन ट्राइड बाय इंडिया in order to rattle China, but China hasn't been rattled by such steps. आगे देखिए, meanwhile they entrap New Delhi into expensive commitments. डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, ओके, एंड ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, अभी आपने देखा, और आपकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो डिप्लोमेटिक सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में और आपके मिलिट्री के सेंस में, तीनों सेंस में अच्छा नहीं है, और ये एक्सपेंसिव भी है। ओके, ये एक्सपेंसिव भी है। क्या? कन्वेंशनल मिलिटरी बिल्डअप अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर by India. According to Harshvi Pant, this is not economically justified, this is not diplomatically successful, this is not militarily sustainable, and this is going to be expensive also. आगे देखिए, meanwhile, I'm sorry, next, in reality, the reason New Delhi persists with the same old principles despite changing strategic conditions may be that Indian nuclear capabilities are not all that assessment suggests. और यहाँ पास Harshvi Pant is of the opinion that it might also be the case that India still lacks the preemptive nuclear strike capability, or India's insistence on no first use policy is more a matter of compulsion rather than choice, because India really lacks preemptive nuclear strike capability. Okay, तो जो assessment है कि India has developed or India is capable of going for nuclear preemptive strike capability, that assessment might be wrong. Okay, आगे देखिए, India remains fundamentally vulnerable. Okay, so because of this lack of capability, India might be vulnerable, or India might continue to be fundamentally vulnerable. For a country facing two nuclear armed adversaries, और ये कौन है two nuclear armed adversaries? पहला पाकिस्तान और दूसरा है China. China and Pakistan, both of which have territorial aims. So how you know that both of which have territorial aims? Pakistan has been insisting on various territories controlled by
बाय इंडिया, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। ओके, फिर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर रीजन में अलॉन्ग विद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट इज पीओके। फिर गिलजिट बल्टिस्तान एरिया, फिर सियाचिन ग्लेशियर। ओके, फिर आप जानते हैं कि द इशू इज ऑल्सो ऑफ सर क्रीक, द वाटर बॉडी इंडिया वेस्टर्न साइड। तो इन सारे एरियाज में पाकिस्तान के टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं, और चाइना का भी टेरिटोरियल एम्बिशन है इन ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड मिडिल सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, समटाइम्स ओनली, समटाइम्स होल अरुणाचल प्रदेश, है ना। बहुत टाइम में क्या है, तवांग रीजन तक चाइना का क्लेम रहता है, लेकिन कुछ टाइम वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करने लगे होता है। मिडिल सेक्टर्स में भी सिक्किम के एरिया को छोड़ के लगभग सभी जगह प्रॉब्लम है। ओके, ऑल द पॉइंट्स in mentioned in that particular boundary that we have with China according to India are contentious. Then western sector में आप जानते हैं Aksai Chin region and all the contiguous region that we share with China. और अभी की जो recent conflict है गलवान वैली में, that is again because of the different interpretations with respect to the boundary that we share with China. कौन सा पार्ट किसके कंट्रोल में है, इसी में तो डिफरेंस है। ओके, आगे देखिए। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं अलग अलग जगह। ओके, तो ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और दोनों के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेरिटोरियल एम्बिशंस भी हैं। ओके, both of which have territorial aims against India and maintain strategic alliance by targeting it. Okay, and आप जानते हैं कि China and Pakistan have made strategic alliance against India. So according to their foreign policy establishment of these two states, India and China are natural friends. Okay, वो एक दूसरे को नेचुरल फ्रेंड्स मानते हैं, और उनकी जो फ्रेंडशिप है अकॉर्डिंग टू देम दैट इज हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशियंस, स्वीटर देन द हनी। समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो चाइना पाकिस्तान अपने अपने केस में मानते हैं कि वो इतने बड़े फ्रेंड हैं कि उनकी जो दोस्ती है वो पहाड़ों से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है और शहद से भी ज्यादा मीठी है। ओके, और ये पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरी और शहद से ज्यादा मीठी क्यों है? क्योंकि दोनों का दुश्मन कौन है? या दोनों इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इंडिया के एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सिक्योरिटी थ्रेट्स और द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट इंडिया फेसेस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, एंड दैट इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमेटिक हियर। ओके, तो यहाँ पास हर्षवीर पंत एक्चुअली इन आर्ग्यूमेंट से इंडिया की वल्नरेबिलिटी को दिखा रहे हैं। ओके, Okay, so for a country facing two nuclear adversaries, that is China and Pakistan, both of which have territorial aims against India, maintain a strategic alliance, that is China and Pakistan also maintain a strategic alliance by targeting India. India's nuclear arsenal remains relatively modest, 150 atomic warheads and perhaps 50-60 missiles. ये क्या है? ये relatively modest है, बहुत ज्यादा नहीं है न्यूक्लियर आर्सेनल। Okay, any preemptive targeting of Pakistani atomic assets, for example, would consume most of that arsenal, leaving India utterly vulnerable to Chinese strike. अगर इंडिया सोचता है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ना अडॉप्ट करके प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक अपनाए, ओके, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का क्या मतलब होता है कि इंडिया फर्स्टली स्ट्राइक करे, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक जो होगी इंडिया की तरफ से होगी न्यूक्लियर वेपन की। तो इतने मॉडेस्ट जो न्यूक्लियर आर्सेनल है हमारा, सिर्फ 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 50-60 मिसाइल्स हैं। उस केस में क्या होगा
कि उसमें से बहुत सारा मटेरियल पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में ही खत्म हो जाएगा। हर्षवी पंत ये कह रहे हैं। तो चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं बचेगी, और उससे क्या होगा, वी विल बिकम वल्नरेबल टू चाइना। ओके, देन चाइना विल बी एबल टू डिवास्टेट अस with its nuclear attack. Okay, an attack on Pakistan would meanwhile free the Chinese from any moral compunctions against using nuclear weapons of its own, even as it undermines India's own moral authority. और इस पॉइंट को समझे, यहाँ पास हर्ष विपत क्या कह रहे हैं कि इफ वी गो फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एट ऑल विथ पाकिस्तान और अगेंस्ट पाकिस्तान, आई एम सेइंग, मतलब कि अगर हम करते हैं कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ, किसकी, न्यूक्लियर वेपन की, तो क्या होगा, ये चाइना को एक अच्छा पहली बात तो चीज है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो बहुत, उसका आर्सेनल, उसका जो हमारे पास स्टॉक है वो बहुत बड़ा नहीं है। 150 एटॉमिक वॉरहेड्स हैं, 50-60 मिसाइल्स हैं, तो उसमें से बहुत बड़ा पार्ट हमको पाकिस्तान के केस में ही खर्च हो जाने वाला है, पहली केस ये। और अगर हमने ऐसा किया भी कि हमने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, न्यूक्लियर स्ट्राइक, और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई, मतलब कि हम पहला अटैक हमारी तरफ से ही गया, तो क्या होगा, चाइना को एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा कि देखो देखो चाइना के इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जाना चाहिए। ओके, मतलब कि उसके जो मोरल कंबंक्शंस होंगे वो जो है वो खत्म हो जाएंगे, किसके, चाइना के। But China will not be under any moral compulsion or compunctions not to go for any kind of nuclear strike against India, because India has already done preemptive strike against Pakistan, अगर इंडिया ऐसा करता है तो। ओके, और इससे और एडिशनल डिसएडवांटेज क्या है कि इंडिया की जो मोरल अथॉरिटी है वो भी कम होगी। इस वजह से अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक करता है, प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे क्या हो जाएगा, इंडिया की खुद की अथॉरिटी अंडरमाइन होगी। कौन सी अथॉरिटी, मोरल अथॉरिटी। ओके, इन दैट वे relinquishing its no first use policy would actually exaggerate India's nuclear dilemmas। और इन वजहों से अगर हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिलिंक्विश करते हैं तो क्या होगा, वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगी, वो हमारे न्यूक्लियर डिलेमा को या न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ा देगी। ओके, मतलब कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमको अभी भी अच्छे से सर्व कर रही है, डिप्लोमेटिकली भी और दूसरे सेंस में भी। फर्स्ट यूज स्ट्राइक के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, जो भी कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल है अगर हमने उसे पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर लिया तो हमारे पास चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बचेगा। दूसरी बात क्या होगी कि चाइना को एक अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा कि वो इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन अटैक कर सके। ओके, और क्या नुकसान होगा कि न्यूक्लियर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट का जो हम इमेज डेवलप कर पाए हैं वो हम खो देंगे, तो मोरल अथॉरिटी भी हमारी कम हो जाएगी। ओके, आगे देखिए, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पास। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चन हियर। If you have any question, you can ask me. Okay. If this is so, then we will analyze his opinions further. Okay. In that way, relinquishing
इट्स नो परस्यूज पॉलिसी वुड एक्चुअली एक्सेसरेट इंडियाज न्यूक्लियर dilemmas। मतलब कि हमें यहाँ पर जो न्यूक्लियर एरिया में या न्यूक्लियर वेपन्स के डॉक्ट्रिन में या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमारी जो डिलेमास है उसमें वो और बढ़ जाएंगे। There is also the problem that its existing arsenal is not really suited to any of its tactical objectives. Okay, there is also the problem that its existing arsenal, मतलब इंडिया का जो existing arsenal है is not really suited to any of its tactical objectives. ठीक है, तो tactical objectives का मतलब क्या होता है कि जो immediate objectives हैं। immediate objectives क्या है यहाँ पास? चाइना से सेफ्टी या चाइना जो थ्रेट पोज कर रहा है और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पैदा हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना। तो एग्जिस्टिंग आर्सेनल क्या है, वो सूटेड नहीं है कि हम इन टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को मतलब इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पास अचीव कर पाए। ओके, आगे आइए। एज द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भरत करनाथ हैज आर्ग्यूड द ओनली credible nuclear deterrent in case of an Indian-Chinese war on the Himalayan front would be atomic demolition munitions placed just behind the prepared defensive line along the likely ingress routes of the Chinese military in the mountain. मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भरत करनाथ is a fiercely realist thinker that we have in India, and here his realism is in full projection when he comes out with this kind of a statement where he says that only credible nuclear deterrent in case of Indian-Chinese war on the Himalayan front would be atomic demolition munitions. Atomic demolition munitions. ओके, मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एटॉमिक demolition munitions placed just behind the prepared defensive line along the likely ingress routes of the Chinese military in the mountain. मतलब क्या भरत करना क्या कह रहा है कि सिर्फ एक जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट होगा अगर इंडिया चाइना वॉर होता है तो वो क्या है कि डिफेंसिव लाइन के जस्ट पीछे आप क्या प्लेस करें, एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशंस। एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशंस प्लेस करें जो किस रूट में हो, वो अगर चाइनीज मिलिट्री इनग्रेस करती है मतलब क्रॉस करती है और आग इंडियन टेरिटरी में घुसती है तो उसको कौन फेस करे, वो किसको फेस करेगी, वो एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशंस को फेस करेगी। ये अकेला न्यूक्लियर डिटरेंस है जो हम रख सकते हैं चाइना के अगेंस्ट ये इंडिया चाइना वॉर में। मतलब न्यूक्लियर डिवाइसेस कहाँ रखी जाए, न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे जाए, एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशंस कहाँ रखे जाए, जस्ट बिहाइंड द प्रिपेयर डिफेंसिव लाइन along the likely ingress routes of Chinese military in the mountain, जहां से वो चाइनीज मिलिट्री इंडिया में इंटर करेगी। ओके, वेरी गुड स्टेटमेंट and very realistic statement, I would say. Atomic munition demolitions are nuclear landmines. यही चीज है। एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशंस क्या होता है, ये न्यूक्लियर लैंड माइंस है। आप लैंड माइंस जानते हैं ना, आपने मूवीज में भी लैंड माइंस देखे होंगे, तो न्यूक्लियर लैंड माइंस भी होती है, उन्हीं को बोला जाता है एटॉमिक म्यूनिशंस डिमोलिशंस। Okay, so MDs are what? Nuclear landmines whose tactical value in the rugged terrain of the Himalaya has been questioned by Indian Army since 1960s. अब यहाँ पास actually Harshvi Panth is of the opinion that whatever has been suggested by Bharat Karnat in this context has been questioned by Indian Army. Its reliability has been questioned by Indian Army. Its feasibility has been questioned by Indian Army. Its tactical value has been questioned by Indian Army. Okay. Moreover, as the downstream nation का मतलब क्या होता है? Nations दो तरह के हो सकते हैं. For example, if two nations share any water body, then the flow of water body will decide that if any country is downstream country
और अपस्ट्रीम कंट्री। ओके, तो आप देखेंगे कि ऑल द रिवर्स दैट इंटर इंडिया फ्रॉम तिब्बतन रीजन, in all those rivers India is a downstream nation. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस का केस लें, ओके, इंडस रिवर का केस लें, तो इंडिया इज अ अपस्ट्रीम नेशन, इंडिया इज अ अपस्ट्रीम नेशन एंड पाकिस्तान इज अ डाउनस्ट्रीम नेशन। ओके, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी bring any kind of revision in Indus Water Treaty, in adopting any measures, any arm twisting measures in Indus Water Treaty to compel Pakistan, okay, the retaliation can be, or the same kind of steps can be taken by China in many of the rivers, okay, where we are in the downstream nation, we are as the downstream nation. चाइना के साथ यहाँ पास एडवांटेज क्या है कि चाइना किसी भी रिवर के केस में अपने नेबर्स के साथ डाउनस्ट्रीम नेशन नहीं। इंडिया के साथ दिक्कत है कि इंडिया कुछ रिवर्स में अपने नेशन के लिए एक अपस्ट्रीम नेशन है, ओके, और कुछ रिवर्स में डाउनस्ट्रीम नेशन। जैसे इंडस का केस जैसे मैंने बताया, तो उस केस में इंडिया इज अपस्ट्रीम नेशन एंड पाकिस्तान इज अ डाउनस्ट्रीम नेशन, बट इन मैनी ऑफ द रिवर्स इंडिया इज अ डाउनस्ट्रीम नेशन एंड चाइना इज अ अपस्ट्रीम नेशन। But the benefit with China is this, that it is not a downstream nation with any of its neighbors. Okay? तो ये एक चीज, एक फायदा जिसको मिलता है। अब यहां पास मैंने आपको रिवर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, यही चीज माउंटेनियस कॉन्टेक्स्ट में भी होगी। और इसको यहां पास आप समझिए कि यहां जो एटॉमिक म्यूनिशंस डेमोलिशंस जो है, एडीएम्स जिसकी बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर लैंड माइंस की तरह होती हैं और जिसकी टैक्टिकल वैल्यू को मिलिट्री इंडियन आर्मी के द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है, वो क्यों ऐसा है? वो इस वजह से ऐसा है। मोर एज द डाउनस्ट्रीम नेशन, द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर यूज वुड बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया मोर देन दैट फॉर चाइना। अगर हम ये इन न्यूक्लियर लैंड माइंस को अगर यहाँ पास रखते भी हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ओके, ताकि चाइनाज मिलिट्री अगर इनग्रेस करे तो वो जो फेस करेगी वो क्या होगी, यहाँ पास न्यूक्लियर लैंड माइंस होगी। ओके, तो अगर ये न्यूक्लियर लैंड माइंस यहाँ पास यूज की जाती है और यहाँ पास न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, ओके, ये न्यूक्लियर डेटोनेशन होता है, तो उसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, रेडिएशन। तो हम क्या है, एक डाउन स्ट्रीम नेशन है। चाइना क्या होगा, चाइना यहाँ पास रीच उसकी जो होगी, उसका जो हाइट में लोकेटेड होगा, तो रेडिएशन का इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा डिजास्टर्स कहाँ होगा, इंडिया के लिए होगा, बिकॉज वी आर अ डाउन स्ट्रीम नेशन इन दैट रगड ट्रेन, रगड माउंटेनियस ट्रेन में इंडिया डाउन स्ट्रीम में है, चाइना अप स्ट्रीम में है। तो अगर न्यूक्लियर लैंड माइंस यहाँ यूज भी की जाए जहां से चाइनीज मिलिट्री इनग्रेस करेगी, तो वहां पास अगर न्यूक्लियर डेटोनेशन होता है या न्यूक्लियर वेपन में ब्लास्ट होता है, तो उससे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, रेडिएशन जो होगा, उसका बैड इफेक्ट कहाँ होगा, इंडिया में डिजास्टर्स होगा ज्यादा। ओके, efficiency notwithstanding, the problem of proportionality persists as well. Okay, the problem of proportionality persists as efficiency, और प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसकी भी यहाँ प्रॉब्लम है कि कितना एफिशिएंट होने वाला है वो, और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जितना उससे मिलेगा वो कितना होगा, कितना इफेक्टिव होगा, ये चीज भी क्वेश्चनेबल है। नो डिसीजन मेकर इन बीजिंग वुड बिलीव अ थ्रेट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू डिटर सलामी स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल पोर्शंस ऑफ टेरिटरी। और एक्चुअली होगा क्या कि अगर इसे एक इस तरह की पॉलिसी की तरह यूज किया जाए कि माना जाए कि इंडिया अगर ये इसे एक पॉलिसी की तरह प्रोजेक्ट करता है ताकि चाइना को डेटर किया जा सके कि हमने भाई न्यूक्लियर लैंड माइंस बिछा रखी हैं, अगर तुम इंटर करोगे तो यहाँ पास न्यूक्लियर बॉम्ब फूट जाएगा, अगर ऐसा कुछ हमने किया। तो ये जो है बीजिंग में
डिसीजन मेकर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ये उसको बिलीव नहीं करने वाले। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किसको बोलते हैं, आप पहले ये समझ जाओ। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किसको बोलते हैं? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उन्हें बोलते हैं जहां पास न्यूक्लियर वेपन को बहुत ज्यादा दूर भेज के नहीं फोड़ा जाता। ओके, तो डेटोनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट डन इन एनी farthest point, ओके, और इन एनी फार अवे पॉइंट। टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स को वही 20-25 किलोमीटर के एरिया में ही डेटोनेट किया जाता है। तो अगर न्यूक्लियर लैंड माइन्स अगर हम बिछा रहे हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दिल्ली यूज कर, इंडिया यूज करेगा अगर थोड़ा सा टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट चाइना ने, सलामी स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल पोर्शन का मतलब होता है कि इंडिया का थोड़ा सा पार्ट अगर चाइना इन्वेस्ट कर दिया, दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ चाइनीज। वो थोड़ा सा टेरिटरी क्या है अपने हिस्से में ले लेते हैं। ओके, तो सैलमी को स्लाइसिस कैसे होंगे, सैलमी के स्लाइसिस ऐसे होंगे ना, तो एक थोड़ा सा स्लाइस चाइना ने ले लिया, फिर थोड़ा सा ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ टेरिटरी। तो अगर ये सैलमी स्लाइसिंग चल रही है और उसके बदले में अगर इंडिया ने ये मनवाना चाहा बीजिंग से कि तुम ऐसा करोगे तो हमारे यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब हमने माइंस बिछा रखी हैं, न्यूक्लियर लैंड माइंस, जहाँ पास से न्यूक्लियर बॉम्ब फूटेगा, वो बीजिंग मानने वाला नहीं है। मतलब बीजिंग को भरोसा ही नहीं होगा कि न्यू दिल्ली सिर्फ और सिर्फ छोटी सी टेरिटरी लूज करने में न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा, है ना। हमने जो आइडियलिस्टिक इमेज बना रखी है वर्ल्ड में, उसमें बीजिंग हमारी मानने वाला नहीं है। अगर हम उससे बोलेंगे कि हमने न्यूक्लियर लैंड माइन्स बिछा रखी है, अगर आपकी आर्मी हमारे लैंड में एंटर करेगी तो वहां पास न्यूक्लियर डिवाइस जो है डेटोनेट कर दी जाएगी, वहां ब्लास्ट होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। ये चीज चाइनीज नहीं मानने वाले, ये चीज चाइनीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, वो उसमें बिलीव नहीं करेंगे कि एक छोटी सी टेरिटरी के लिए इंडिया न्यूक्लियर लैंड माइन्स नहीं बिछाएगा। ओके, मतलब कि वो पॉलिसी वहां पास वर्केबल नहीं होगी, यहाँ कहने का मतलब ये है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो। Beijing remains the overwhelmingly superior conventional and nuclear power. एक्चुअली चाइना क्या है, आप कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें और या फिर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों में सुपीरियर है इंडिया से, अकॉर्डिंग टू हर्षवीर पंत। ओके, to be sure, against the backdrop of Sino-Indian military tensions, calls in India for New Delhi to leverage its nukes for deterrence will grow. Okay, तो एक्चुअली है क्या कि here he is saying that because of the tensions that is going on with China, होगा क्या कि इंडिया के न्यू दिल्ली के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इंडिया में न्यू दिल्ली के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मतलब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर्स को यूज करे या न्यूक्लियर को यूज करने के लिए बात करे। ओके, ये चीज यहाँ पास प्रेशर पड़ेगा। इंडिया हैज बीन हियर बिफोर। ओके, मतलब इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में पहले भी पहुंच चुका है। इन द लेट 1960s, न्यू दिल्ली कंसिडर्ड यूजिंग टैक्टिकल न्यूक to outmatch China in the Himalayas. This might be a new information for you. Okay, so Harshvi Pant is saying that the same kind of context was also present in the late 1960s, where India was considering the use of tactical nuclear weapons
to outmatch China in the Himalayas. But under P.N. Husker, the principal secretary to Prime Minister Indira Gandhi, the Department of Atomic Energy stood firm against the idea. ओके तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो था वो इस आइडिया के अगेंस्ट था. ओके every time a tactical exchange takes place, it noted, it invariably escalates to a strategic exchange as soon as one of the parties starts having the worst of the tactical exchange. मतलब यहाँ पास व्यू जो डेवलप जो प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, वो ये था कि कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर यूज किया जाता है, ओके तो ये एस्केलेट होके क्या हो जाता है, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन के का यूज होने लगेगा. मतलब कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया एटॉमिक डेमोलिशन न्यूमिशंस, ओके एडीएम्स. अभी जो मैंने आपको बताया जो है न्यूक्लियर लैंड माइंस. फिर दिस कैन ऑल्सो बी वेयर these weapons are hurled by missiles. ठीक है, मिसाइल्स जो 20 to 30 किलोमीटर के एरिया में स्ट्राइक करेंगी, तो दिस विल बी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने उस टाइम नोट क्या किया था कि एनी टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सचेंज और एनी यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जनरली विल एस्केलेट टू स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फाइट. और यहाँ पास क्या होगा, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स यूज की जाएंगी. ओके और ये क्या, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहां से कहां स्ट्राइक करेगा, जहां स्ट्राइक करेगा वहीं लॉस होगा. लेकिन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एक्सचेंज क्या होगा, वो उसकी रीच बहुत ज्यादा होगी. तो इंडिया की रीच ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चाइना में है और चाइना की रीच ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया में है अगर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है. ओके तो दिक्कत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज से नहीं है उतनी जितनी इससे की है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सचेंज विल generally escalate to strategic nuclear exchange, and strategic nuclear exchange is going to be very devastating. Okay, आप याद रखिए the kind of nuclear weapons that countries like India and Pakistan also have been able to develop are much more powerful, 10 to 100 times more powerful than the weapons that were used in Hiroshima and Nagasaki. Okay, इस चीज को याद रखिए आप. चलिए आगे देखते हैं. और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क. ओके आगे देखिए. बट पीएन हस्कर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्टूड फॉर्म अगेंस्ट आइडिया. ओके वो चीज में जो मैंने आपको बताई. Every time a tactical exchange takes place, he noted, it invariably escalates to a strategic exchange as soon as one of the parties starts having the worst of the ये एक्चुअली पीएन हस्कर का ये व्यू था कि every time a tactical exchange takes place, it invariably escalates to a strategic exchange. Okay, it invariably escalates to a strategic exchange as one of the parties starts having the worst of tactical exchange. Okay, similar views seem to be shaping thinking in New Delhi today. और यही कारण है कि फॉर एग्जांपल आज न्यूक्लियर लैंड माइंस को यूज करने की जो बात कर रहे हैं भरत कर्नाड, उसको आज न्यू दिल्ली इसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से नहीं एक्सेप्ट कर रही है. मतलब कि इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को इसी वजह से नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. किस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के आर्ग्यूमेंट को. किसके खिलाफ,
चाइना के खिलाफ। किस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में जहां पास चाइना कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों सेक्टर में, दोनों केस में इंडिया से कहीं ज्यादा कैपेबल है। ओके, तो भरत करनाथ ने वहां पास क्या सजेस्ट किया? भरत करनाथ ने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड गो फॉर atomic munitions demolitions, okay, AMDs, and they are kind of nuclear landmines. Okay, then Harshvi Pant says that similar kind of context developed in the last years of the decade of 1960s, but during that time Department of Atomic Energy was completely against this very idea. And P.N. Husker, who was the secretary to the Prime Minister Indira Gandhi, also stood firm. Okay, और उनका ओपिनियन क्या था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से नुकसान ये होता है कि वो एक्सचेंज, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक्सचेंज क्या 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 कौन सी डायमेंशन एक्वायर कर लेता है? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के एक्सचेंज का डायमेंशन एक्वायर कर लेता है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से जो नुकसान होगा एनवायरनमेंट को और दूसरी जगहों को, वो बहुत ज़्यादा लोकल होगा। लेकिन अगर फाइट एस्केलेट होके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पूरी कंट्री को। ओके, आगे देखिए। इट इज वर्थ बिलीविंग Sarma's statement at the Conference on Disarmament. Then, India is wedded to policy of no first use and opposed to nuclear war. Okay? तो आज जब कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में पंकज शर्मा ने जब रिटरेट किया था कि इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स पॉलिसी ऑफ न्यू फर्स्ट यूज, तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाना जाना चाहिए और क्यों ये एक समझदारी की बात होगी जो पीएन हस्कर ने पहले से पॉइंट आउट कर दिया है। वो मेन चीज, यहां मेन आइडिया क्या है? तो आपने समझा इसे? यहाँ पास वही मेन आइडिया ये है कि इवन इफ वी गो विथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सचेंज, द प्रॉब्लम इज दैट इट मे एस्केलेट इनटू strategic nuclear weapon exchange, and this is the reason, or this is actually the reasoning which justifies India's insistence on no first use policy, which has been reiterated by Indian ambassador in conference on disarmament. Okay, ये चीज आपको याद रखनी है। India's nuclear weapons have and will continue to remain weapons of last resort.
and this is reflected in no first use policy. Okay. And these are meant to fulfill only one objective, that is deterring its adversaries from using nuclear weapons first. And this was something which was reflected in credible minimum deterrence policy that was enunciated by your Prime Minister Vajpayee in Indian Parliament. Okay. मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर्षवी पंत इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द रीजनिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछिए। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस हियर एंड I will answer all your questions on this particular discussion that you might have. So you can ask your questions here. You can ask your question. ओके, तो यहां पास चलिए एक क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ओके, ड्रीम आईएएस। तो ड्रीम आईएएस साहब आप सुने कि यूज ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बहुत है। ये क्या है? ये इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह प्रोजेक्ट करता है। फिर ये इंडिया को डिप्लोमेटिक एडवांटेज देता है, डिप्लोमेटिक एडवांटेज देता है। ओके, ये मेनली क्या है? दिस प्रोजेक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। फिर आप और भी याद रखें कि इट हैज ऑल्सो हेल्प इंडिया इन कंक्लूडिंग द डील्स। ओके, विच काइंड ऑफ डील्स? न्यूक्लियर डील्स in form of civil nuclear cooperation. Okay, civil nuclear cooperation जो हमने कंट्रीज के साथ साइन किए, फॉर एग्जांपल यूएसए, जापान। ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को? और यहां पास फिर हर्षवी पंत ने यह भी समझाया है कि आपका फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर आपने डेवलप भी की है और अगर आपके पास है भी, तो वहां पास भी डिसएडवांटेजेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियर आर्सेनल आपका इतना बड़ा नहीं है। तो आपने देखा कि 150 के करीब एटॉमिक वॉरहेड्स हैं और 50-60 के करीब मिसाइल्स हैं।
अगर आप इनको पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर देंगे तो क्या होगा, तो आपके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बचेगा चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए, और फिर चाइना के लिए आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल बन जाएंगे। फिर चाइना को ये एक्सक्यूज भी मिल जाएगा कि देखो इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं माना, और चाइना को एक्सक्यूज मिलेगा इंडिया को स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि चाइना के पास फिर मोरल कंपल्सन्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को अटैक कर दिया है। और आप जानते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट फियर दैट वी हैव इन अवर नेबरहुड इज टू फ्रंट वॉर। ओके, मतलब चाइना और इंडिया दोनों, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ इंडिया का एक साथ वॉर हो, वो हमारा वर्स्ट नाइटमेयर है। ओके, आपको समझ में आए ये केस? आप चाहें तो कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप, हाँ, ड्रीम आईएएस, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए, अगर आपका क्वेश्चन आंसर हुआ तो हम नेक्स्ट डिस्कशन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट the decision that India took in not joining or not becoming part of रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और यहाँ पास एनालिसिस किसके द्वारा है? एनालिसिस है सुरुपा गुप्ता और सुमित गांगुली के द्वारा। ओके, सो दिस इज द कंटेंट दैट आई हैव टेकन फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, और अगेन दिस इज वेरी इनरिच कंटेंट, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पास बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव डायरेक्ट बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन इन माई डिस्कशंस। आप जितने भी चीज़ें यहाँ पास देख पा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप यहाँ पास पा रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हैं विथ यूजिंग द नेम्स ऑफ दीज वेरी स्कॉलर्स, एंड दैट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आंसर्स। ओके, पॉलिटिकल साइंस आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन कि व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, एंड दैट इज आरसीपी। ओके, I should tell you in the outset that RCP so far has been one of the world's biggest trading bloc, but another trading bloc is in the offing, and that is in the African continent. Okay, उसके बनने के बाद, उसके conclusion के बाद, that will be the biggest trading bloc in the world. Okay, which will be there in Africa. Now, here in our discussion, we are going to concentrate on RCEP and India's concerns regarding with it, and the experts comment will be coming from experts like Sumit Ganguli and Surupa Gupta. Okay, आगे देखिए। On Sunday, November 15 Asian nations representing nearly a third of global economy signed regional comprehensive economic partnership, forming the world's biggest trading bloc. ये किसके बारे में बात की जा रही है? RCEP के बारे में बात की जा रही है। ओके, कितने मेंबर्स हैं? 15 एशियन नेशंस हैं। ओके, ये 15 एशियन नेशंस में कौन है? 10 आसियान के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 मेंबर्स ये हो गए। फिर 5 कौन से हैं? चाइना, जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर 14th ऑस्ट्रेलिया, 15th न्यूजीलैंड। ओके, so these are the 10 nations, and other 5 nations are actually the free trade partners of ASEAN nations, these 10 ASEAN nations. उनके बीच में ये डील कंक्लूड हुई, और India was also part of negotiation, but lastly India decided not to join RCEP. Okay, but one Asian economic giant was missing, and that was India. Despite protracted negotiations, New Delhi refused to join them. I told you that actually, I should tell you here that the negotiations for RCEP started in the year 2012.
ओके 2012-13 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे एंड इंडिया वाज देयर in that negotiation table right from the starting. And finally, last year, India decided not to join it. Okay, कुछ चीजें मैं यहाँ पास बता दूं कि ये एक फ्री ट्रेड ब्लॉक जो होगा that will ask for additional opening of India's market to these countries, to these states. ओके देखिए यहाँ पास रीजनिंग तो बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है जिसको मैं अभी आगे आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको वो कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस और वो रीजंस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बहुत इमीडिएट फैक्टर्स बने इंडिया के आरसीईपी को ज्वाइन ना करने के। फिर हम आर्टिकल में आएंगे। ओके देखिए यहाँ पास क्या हुआ। एक्चुअली द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया नॉट टू ज्वाइन आरसीईपी वो ये थे जिसके बारे में अभी बता रहा हूं। तो हुआ क्या कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि नीति आयोग एंड वेरियस इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया इंक दैट इज इंडियन इंडस्ट्रीज, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट थी कॉपर इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इनकी तरफ से बहुत स्टॉन्च अपोजिशन था इसको लेकर। तो दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियन मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विथ चाइनीज प्रोडक्ट्स, और आरसीईपी में जो प्रोविजंस अडॉप्ट किए जाएंगे इंडिया की तरफ से उसमें इंडिया को चाइना जैसी कंट्री के लिए और भी अपना मार्केट एक्सेस देना होगा, मतलब अपने मार्केट को और भी ज़्यादा ओपन करना होगा। और ये डर था कि इंडिया की कई सारी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी चाइनीज प्रोडक्ट से कंपटीशन को झेल रही हैं उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज कंप्लीटली डिवास्टेड हो जाएंगी, एंड दोज वर मेनली कॉपर इंडस्ट्रीज एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। तो इनकी तरफ से ऐसा माना जा रहा था कि आरसीईपी को अगर इंडिया ज्वाइन करता है देन द काइंड ऑफ प्रोविजंस दैट इंडिया विल बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट आर गोइंग टू बी badly effective. They are going to badly affect India's copper industry and aluminium industry. Okay, and this was the opinion of Niti Aayog also. So these were one of the most immediate factors that prevailed during that time, which compelled India not to go for this kind of block. Okay, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है, और इसके अलावा सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम की बात नहीं है, बहुत सारे इशूज हैं जिसको एक एक करके मैं यहाँ पास बताऊंगा, लेकिन यहाँ पास आपको इस बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन के साथ आगे समझना है। ओके, once implemented, RCEP will either reduce or eliminate tariffs on range of goods and services and set up rules on investment and competition and ensure protections for intellectual property. Okay, तो RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership क्या करेगा? It will reduce or eliminate tariffs on range of goods and services and set up rules on investment and competition. Okay, and this will also be focusing on intellectual property, which is the biggest issue in international trade now. Okay, तो आप जानते हैं कि investment issues or intellectual property rights, all that are being guided by WTO norms also. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले से कुछ नॉर्म्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इन सबको गाइड कर रहे हैं। और इंडियाज लॉज, डोमेस्टिक लॉज आर वेरी मच इन कंप्लायंस विद दीज WTO नॉर्म्स, बट द काइंड ऑफ नॉर्म्स दैट आर गोइंग टू बी अडॉप्टेड इन RCP आर इन एडिशन टू WTO नॉर्म्स। ओके, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, और ट्रिप्स हैं, ट्रिम्स हैं, ट्रिप्स मेजर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पास WTO में है, और RCEP में ये और भी ज्यादा है। ओके, यहाँ की प्रोविजंस और भी ज्यादा वाइड है।
तो इसके लिए बहुत सारी कंसर्न्स उठ रहे थे हमारे पास। आगे देखिए, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट इंडिया वुड इन फैक्ट बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग आरसीईपी। मतलब सुरभा गुप्ता एंड सुमित गांगुली, both experts are of the opinion that there were various economists and policy analysts who argued that India would have benefited from joining RCEP, that is Regional Comprehensive Economic Partnership. Actually, RCEP के बारे में एक चीज और बताऊं कि the door for India is still open. Okay, India can join in future also if it gives in writing. Then it can the door. There is an opportunity or an open door is always there if it gives that particular, if it makes that particular intention clear in writing to RCEP. But the problem is this, that if India does not join it initially, then India will not be able to be part of that particular table which is going to frame rules and regulations. Okay, so that was one issue here. Besides obvious upside to domestic consumers in the form of cheaper and higher quality products, the specific advantage of RCP lies in the opportunity it provides Indian firms to participate in global value chains and in attracting foreign investment. यहाँ पास क्या है, according to Surupa Gupta and Sumit Ganguly, what are the obvious advantages? Obvious advantages क्या है, consumers को, Indian consumers को यहाँ पास cheaper goods मिलेंगे which are will be of high quality. Why? Because this will be an open trade arrangement. तो जो कंट्रीज हैं, अगर इंडिया शामिल होता तो 16 कंट्रीज होती, तो बाकी के 15 कंट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं चीपर होते और गुड क्वालिटी के होते। तो गुड क्वालिटी के इसलिए क्योंकि वही प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर कंट्री एक्सपोर्ट करेगी जिसमें वो एफिशिएंट हो, उसकी लेस कॉस्ट में हाई क्वालिटी डिलीवर करने की क्षमता हो, और चीपर इसलिए होंगे बिकॉज देयर विल बी नो टैरिफ हियर। ओके, लेकिन अदर एडवांटेजेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू गांगुली एंड गुप्ता हियर? अदर स्पेसिफिक एडवांटेज आर opportunities is it provides to Indian firms to participate in global value chains. Okay, global value chains. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन लाइंस जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो किसी एक कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती. सो अदर various different part of the words specialize in different kind of production and different types of products. So for example होता क्या है कि for example मैं एक example से आपको इस चीज को समझाता हूँ कि iPhone का example लेते हैं आप. तो you know that it is designed somewhere in Silicon Valley. Okay, then various parts of iPhone are manufactured in country like Germany and other Western countries. And finally, all those parts, design and other parts, are assembled in China. Okay, so because of this mastery over this assembling part of the product, China has been able to become one of the integrated state in the global value chains in the production of various products. India has not become an integrated part of global value chains that exist around the globe. Okay, so this is the point here. If India would have joined such a grouping, that is RCEP, then India would have secured an opportunity to become part of this global value chains in a much integrated manner. आप देखिए यहाँ पास कि चाइना में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर रियल वैल्यू एडिशन की बात की जाए, जहाँ पास कहीं इनोवेशन या रिसर्च की बात है, तो वहाँ पास चाइना बहुत कुछ ऐड नहीं कर रहा है. ओके, नो रियल इनोवेशन और नो रियल वैल्यू एडिशन इन फॉर्म ऑफ रिसर्च और इनोवेशन, but still because of its mastery over the assembling part of that production, it has become part of global value chains. Similar thing, because of the cheap availability of cheap labor and other factors that exist with India or that are there with India, India would have also secured that opportunity to become an integrated part of global value chains, okay, generating
out of becoming part of RCEP. So that is an argument here. Okay, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पास आर्गुमेंट ये है. आगे देखिए, India's experience with past free trade agreements show that these deals have led to increase in exports to Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia and the Philippines. देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी रखता है, जैसे सीपा हो गया, ओके, फिर सीका हो गया, ये बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ. तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो पहले से साइन कर रखे हुए हैं, वो शो करते हैं कि इन्होंने मदद की है. किसकी? इंडिया की. किस सेंस में? एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के सेंस में. जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया जैसी कंट्रीज के. ओके, मैनी ऑफ द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ आसियान, there in those contexts, in those particular countries, we have been successful increasing our exports. Okay, in that sense क्या हुआ है कि ये बेनिफिशियल रहा है हमारी कंट्री के लिए. ओके, आगे देखिए, चीपर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज फ्रॉम कंट्रीज सच एज जापान हैव इंक्रीज्ड इंडियाज प्रोडक्टिव कैपेसिटी. और क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे हैं इन कंट्रीज के साथ, तो वहां से जो प्रोडक्ट आता था उसमें क्योंकि टैरिफ नहीं था, तो वो चीपर रहा हमारी कंट्री के लिए. और वो चीपर प्रोडक्ट्स, अगर वो रॉ मटेरियल है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में उसे यूटिलाइज किया गया और उसकी कॉस्ट क्या थी? चीप थी. तो उसने हमारी खुद की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया है. ओके, so this is the argument here. Next, analysts have further argued that joining RCEP would create jobs and sustain economic growth. तो फर्दर एनालिस्ट का कहना है कि RCEP अगर ज्वाइन करते तो that would have generated jobs also and would have boosted growth. तो employment generation और boost to economic growth, ये भी फायदे होते हैं अदर देन ग्लोबल वैल्यू चेन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर चीपर प्रोडक्ट्स जो मिलते और इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता. तो ये सारी बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, देयर वर कंपेलिंग पॉलिटिकल रीजंस फॉर ज्वाइनिंग RCEP एज वेल. अब ये सारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिनको अभी तक बताया. अभी कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं अकॉर्डिंग टू सुरपा गुप्ता एंड सुमित गांगुली. एंड व्हाट आर दोज पॉलिटिकल बेनिफिट्स? पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो है वो ये, बीइंग अ सिग्नेचरी वुड हैव गिवन इंडिया अपॉर्चुनिटी टू सेव द एग्रीमेंट इन फ्यूचर. हाँ, अगर RCEP का मेंबर होता है स्टार्टिंग से ही, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेव द एग्रीमेंट इन फ्यूचर. तो आगे जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस यहाँ बनेंगी, ओके, और जो पर्टिकुलर टीम इसे शेप करेगी, इंडिया उस टीम का पार्ट होता. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको दूसरा ओपिनियन भी बता दूं विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय अदर कमेंटेटर्स कि एक्चुअली है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल आप पी चिदम्बरम का आर्टिकल अगर आपने देखा हो जो 2 दिन पहले आया था हिंदू में, उसमें उन्होंने बताया था कि वो कह रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म is already high, okay, around the globe. ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि पैंडेमिक एंड इट्स बैड इफेक्ट्स इन इकोनॉमी इज ऑलरेडी बीइंग विटनेस्ड. तो जहां पास एक्चुअली संभावना है बहुत ज्यादा कि इंडिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर पाएगा, वो है एक्सपोर्ट. और एक्सपोर्ट कहाँ पास पॉसिबल है?
जहां जहां पॉसिबल है वहां उन एरियाज में कमी आ रही है, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म आप जानते हैं, अगर PSPSIR के स्टूडेंट हैं तो आपने इस तरह के बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पास ये दिखाया गया है कि प्रोटेक्शनिज्म अराउंड द ग्लोब इज इन द राइज. Then any country, if at all it wants to promote its export, then these kind of regional groupings or regional blocks are actually the most productive or most fruitful blocks to attain that particular objective. Okay, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको इसको RCP को देखना है. आगे चलते हैं. एंड यहाँ पास फिर से इस पॉइंट को देख लें कि देयर वर वेरियस कंपेलिंग political reasons for joining RCEP. और उसका मेन पॉइंट क्या था कि इंडिया वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शेप द एग्रीमेंट इन फ्यूचर, एंड staying out of the deal isolates India, limiting its ability to shape the emerging trade architecture. And emerging trade architecture is being shaped by groupings like RCEP. Okay. The potential benefits notwithstanding, India's refusal to accede to the agreement was not entirely surprising. Well, according to Ganguly and Shrupa Gupta, this was not surprising. But what are the reasons that they are providing? Let us see it. For decades, New Delhi has followed a highly protectionist set of economic policies. Okay, मतलब according to Ganguly, India has been following protectionist set of economic policies as part of its historic commitment to strategy of import substituting industrialization. अब जानते हैं कि India after independence under the leadership of Prime Minister Nehru adopted import policy of import substitution. What is the meaning of import substitution? Import substitution means कि any product which is being imported, domestic capability should be developed to produce it in domestic front. Okay, so that could be developed or that could be manufactured domestically. तो इससे होगा क्या कि इससे सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा. सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा. ओके, और सेल्फ रिलायंस से क्या होगा, मतलब सेल्फ रिलायंस will ensure that India doesn't depend on import. Import bill कम होगा. Import bill कम होगा तो क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ट्रेड के सेंस में हम सरप्लस एंजॉय करने लगेंगे. ओके, वो हमारे लिए एक फेवरेबल चीज होगी. लेकिन it is not just about Nehruvian policy. In India's recent initiatives that we have seen in form of say Atmanirbhar Bharat, हमने इसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली पॉलिसी को फिर से इमर्ज होते देखा है. ओके, आगे देखिए. इट वॉज ओनली इन द आफ्टरमाथ ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल क्राइसिस इन द ईयर 1991 that the country gradually moved to dismantle an array of tariff barriers. Okay, तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थ्रू आउट द डिकेड्स इन लास्ट सेंचुरी रही है, और 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स करते हैं तब यहाँ पास थोड़ा सा, और LPG रिफॉर्म्स वर एक्चुअली रिजल्ट ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस ओनली. So in a way you can say that the BOP crisis necessitated those kind of reforms, because we needed to go to IMF to resolve this particular crisis that we have in form of BOP crisis. And all the LPG reforms that we took or we adopted, many of them were actually the result of the compulsions that arose when we took
loan from IMF. Okay, and how those compulsions are emerged, that were part of structural adjustment program of IMF, SAP, structural adjustment program of IMF. These kind of programs necessitate any country, or in a way compel any country to go for LPG reforms. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें आप. Even though India's integration into the global economy increased dramatically during the last 30 years, New Delhi's rhetoric in trade negotiations has remained mostly protectionist. Okay, तो मतलब in last years you have seen, in last 30 years अगर आप देखें 1990s का पूरा डिकेड, फिर 2000s का 21st century का first decade and second decade, that is total 30 years have been since we have adopted LPG reforms in the year 1991. तो इंटीग्रेशन क्या बढ़ा है? इंटीग्रेशन बढ़ा है. तो अगर आप देखें कि इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड वो बढ़ा है. ग्लोबल ट्रेड एज परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में डेटा मिल जाते हैं इसके. दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड. ओके, ऑल दैट हैज हैपेंड, बट अकॉर्डिंग टू सुमित गांगुली, न्यू दिल्ली का जो इंसिस्टेंस रहा है जब भी वो ट्रेड निगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करती है, तो वो मोस्टली क्या रहा है? प्रोटेक्शनिस्ट रहा है. ओके, एंड हियर इन दिस इंस्टेंस आई शुड टेल यू दैट various interest groups in India, various interest groups in India, for example, Swadeshi Jagran Manch, okay, which is an affiliate of RSS, and other such groups have insisted on protectionist measures, and we have seen in most of the occasions government has come under the compulsion of these interest groups or pressure groups. Okay, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं उनको, तो इस केस में आपको ये याद रखना है. आगे चलते हैं. यू कैन आस्क एनी डाउट ऑल्सो इफ यू वांट. अगर आप चाहें तो कोई डाउट भी पूछ सकते हैं. Okay, let us move further. And this tone मतलब कौन सी? प्रोटेक्शनिस्ट, क्या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर इंसिस्टेंस. एंड दिस टोन हैज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, which focused on Make in India strategy early in its tenure. According to Sumit Ganguly, this particular insistence on protectionism has become more strong under the leadership of Prime Minister Modi, और जिन्होंने मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए. Now, in this particular thought, I would be against this esteemed scholar Sumit Ganguly, because Make in India, Make in India is being interpreted wrongly by Ganguly here, because Make in India is not insisting on protectionism. Make in India is insisting on the promotion of domestic manufacturing. That is not synonymous with protectionism. Okay, so Make in India should not be confused with a policy which insists on protectionism. So here I would say that Sumit Ganguly is not justified in making such kind of comparison or drawing such a kind of parallel in case of Make in India, because this is not a protectionist measure. Okay, this is a measure, or this is an attempt to boost manufacturing in India.
Okay, because this is highly labor intensive in our case, and the purpose here is to increase employment opportunities. Okay, so this is one of the main reason, and here I would suggest that Sumit Ganguly's opinion is not correct. Okay, this would be a wrong reading of the steps like Make in India. आगे चलते हैं. More recently, even before the coronavirus pandemic created the Indian economy, created the Indian economy, it announced a policy of economic self-reliance, that is Atmanirbhar Bharat, in Hindi, designed to boost domestic industry. Okay, actually, Atmanirbhar Bharat was designed and introduced during the pandemic only, when there were visible effects of slowdown in the economy and also job loss. Okay, so during that time, Atmanirbhar Bharat was announced, and this particular initiative was uh, uh, received and introduced by Indian government. So again, Ganguly is slightly incorrect in reading this particular timing that he is indicating to us. In some ways, these policies hark back to a previous era when the pursuit of economic self-reliance was integral component of India's development strategy. आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ सुमित गांगुली बल्कि दूसरे important personalities को भी सुना होगा. So for example, if you recall, Raghuram Rajan was also of the opinion, former RBI governor, he was also of the opinion that if Atmanirbhar Bharat is insisting on import substitution, then that is not going to be a correct policy. Okay, तो ये सिर्फ सुमित गांगुली की तरफ से नहीं, ये और दूसरे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये सजेशंस रखे गए थे कि अगर आत्मनिर्भर भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो इवन रघुराम राजन ने भी कहा था कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टेप. ओके, लेकिन आत्मनिर्भर भारत इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. You should remember that when India is trying to boost its manufacturing, or if India is insisting on developing the domestic capability for production, then it should be seen in line with the rising protectionist walls that are witnessed in around the globe, even in countries like USA or various Western European countries. इन सब जगह यहाँ पास प्रोटेक्शनिज्म हाई है. उस समय इंडिया का लिबरलिज्म को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके अपने अकेले झंडा खड़ा कर रखना ये एक बेवकूफी होगी. ओके, तो यहां पास एक्चुअली है क्या कि वेरियस एक्सपर्ट्स, इफ दे आर नॉट वेल एक्वाइंटेड विद द इकोनॉमिक नेसेसिटीज ऑफ इंडिया और ऑल द exigencies that we have in field of economics, then they can go on promoting the mantras of globalization and liberalization, even when, according to your foreign external affairs minister, have contributed in the deindustrialization process of India, then those kind of statements should be read with caution. Okay, आगे चलते हैं. In some ways, these policies hark back to previous era when the pursuit of economic self-reliance was an integral component of India's development strategy. Yeah, मतलब this is signifying, and this is indicating to Nehruvian vision of self-reliance, which was
completely focused on import substitution. But Atmanirbhar Bharat is not just about import substitution. Okay, aspects of India's experience with free trade agreements have reinforced an ideological narrative of the importance of self-reliance. तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ, उसने रीइंफोर्स किया है किसको, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को, किस कॉन्टेक्स्ट में, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस के इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में. अभी सुमित गांगुली इज येट टू प्रूव दिस वेरी पॉइंट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट हियर. Even though the government's own research has shown that India has in some benefited from trade agreements it has signed in the past, critics have pointed out that as a result of previous agreements, India has negative trade balances with several RCEP member countries. Yes, this particular point is important. And now Ganguly is coming to terms with the reality here. Actually होता क्या है कि you have seen that RCEP में कितने मेंबर हैं आप जानते हैं. It is a 15-member group. If India would have joined, then there would have been 16 members. So it is a 15-member group. Okay. And in 11 out of 15, India is already having a trade deficit. देखिए अब क्या है यहाँ कंडीशन. ओके, मतलब कि 15 मेंबर जो आरसीपी में है, इंडिया अगर ज्वाइन करता तो +1 करके 16 हो जाता. तो इस 16 मेंबर में 11 कंट्रीज के साथ इंडिया का ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है. ओके, और इस केस में जब ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है, अगर इंडिया अपने मार्केट को और भी ओपन करता है उस कंट्रीज के साथ, तो आप क्या सोचते हैं कि दैट वुड हैव exacerbated the problem of deficit that we already have with those countries. Yes or no? Yes. Okay. So this was something which was highlighted by Niti Aayog when India was pondering over the question of joining this particular group. Okay. Critics have also linked such agreements such as FTAs with Japan, South Korea and ASEAN to the decline of manufacturing in India. And this was something which was highlighted by your External Affairs Minister Jaishankar when he says that globalization, liberalization, all these are being used as mantras, but regardless of this particular fact of Indian economy, that they have also contributed in the deindustrialization process of India. Okay. और ये बहुत पुराना स्टेटमेंट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ. ये 15 नवंबर को जब 14-15 नवंबर को जब ये आरसीपीज का कंक्लूजन हुआ था, उसी कॉन्टेक्स्ट में जयशंकर ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया था. अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली गांगुली हैज आल्सो इंक्लूडेड दैट स्टेटमेंट इन हिज ओन आर्टिकल. यहाँ पास नेक्स्ट लाइन वही है. Subramaniam Jaishankar, India's Minister for External Affairs, recently argued that the trade deals have led to deindustrialization. Okay, and while the minister did not mention specific sectors, trade associations argue that industries such as electronics and light manufacturing have suffered on account of FTAs. Okay, so this particular viewpoint shows that in a way India was justified in not joining or not becoming part of RCP, regardless of the arguments that are coming in favor of joining these particular groups. Okay, India per se is not against liberalization of the trade, but that liberalization should be beneficial to the Indian economy. That is the whole logic of free trade. Okay, कि free trade का मतलब फ्री ट्रेड आपकी इकोनॉमी को फायदा करे. ये पॉइंट वैलिड लग रहा होगा आपको. उस फ्री ट्रेड का क्या मतलब, जो वो आपकी इकोनॉमी में जो इफेक्ट है उसका, वो उसका इफेक्ट नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, और आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बूस्ट ना होके उसमें
रिवर्स प्रोसेस होकर वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और समझिए, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स बट it will make your understanding even broader in this particular context. You should remember that India is a unique example किस context में, that it is the only country which has made this quantum transition of being an agriculture dominant economy to a service sector dominant one. Okay, मतलब इंडिया इज ओनली कंट्री जहां पास आप देखेंगे कि पहले इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेंट थी, अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को देखें, और आज के केस में वो सर्विस सेक्टर डोमिनेंट वन है अगर आप सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें। मतलब इंडिया हैज बिकम सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी इवन विदाउट बिकमिंग फुली इंडस्ट्रियलाइज्ड। ओके, and that is why it is needed in our part to make a U-turn to come back to process of industrialization and to reach to its full potential, then move to service sector. Because the general path of transition that has been followed by countries across the globe has been such that first they are agriculture dominant one, and then they industrialize fully, and then finally they reach to the stage of service sector dominant economy. So this is the path that has been followed by countries all around the world. So for example, if you see the developed economies in OECD group today, they are mainly the economies in Western European continent. Then these are mainly service sector dominant economies. The examples would be UK, France, Germany and other countries. But these are the countries which initially started with agriculture. Then you have seen that the first industrialization also happened in these countries, and then finally they made a transition where now at this particular juncture they are economies with service sector dominant ones. Okay, so their economies at present time is dominated by service sector. So various of the economic problems or the problems in the different sectors of economy in India is mainly because of this particular fact that India has become a service sector dominant economy without becoming fully industrialized. And there has been one famous leader by this very name, Lee Kuan Yew. इनका एक बहुत famous statement है. He's a kind of legend, you should Google about him. उन्होंने कहा है कि no country has become developed without becoming fully industrialized. I repeat, Lee Kuan Yew ने कहा है कि no country has become fully developed without becoming fully industrialized. Okay? तो आप ये पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते कि देखिए फ्रांस, यूके, जर्मनी सब सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी है, तो क्या गलत बात है कि अगर इंडिया भी सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी है? सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी होने में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तब है जब हम फुली इंडस्ट्रियलाइज ना होके भी सर्विस सेक्टर डोमिनेंट हो। हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपनी पीक कैपेसिटी में ले जाना है और फिर हम सर्विस सेक्टर में ट्रांजिशन करें, तब हम इकोनॉमी की फुलेस्ट पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर पाएंगे। ये कंट्रीज जो आज सर्विस सेक्टर डोमिनेंट हैं वो पहले कभी इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं पूरी तरह से, और इसीलिए आज उनकी इकोनॉमी की फुलेस्ट पोटेंशियल फुल डिस्प्ले में है। ओके, आप एक चीज को और भी ध्यान रखें कि व्हाई देयर हैज बीन समथिंग कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, only because India did not industrialize itself fully.
and service sector offers very limited job opportunities because it is a capital intensive and technology intensive sector which caters to the labor force which is highly skilled. But the feature of labor force in India is such that it is mainly unskilled and at max semi skilled. Though, so industries would be the area where that large chunk of labor force that we have, which is disguisedly unemployed in agriculture, could be brought about and made a positive shift and transition towards industrialization. Okay, so that will lead to the generation of employment in your country. Okay, will be helpful in realizing the fullest potential of our economy. समझ रहे हैं तो इसीलिए हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री सेक्टर में खासकर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हर वो चीज़ जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेगी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं करेगी वो हमारी इकोनॉमी के हित में नहीं है समझ रहे हो आप इस बात को अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आगे चलते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन Okay, so I don't think you have any question here. So we can move forward with our next argument here by Sumit Ganguly. There is no denying that policy and regulatory reforms and the efforts to build a supportive infrastructure did not accompany past trade deals, limiting potential gains from FTAs. Matlab Sumit Ganguly is of the opinion that this fact cannot be denied that the policy and regulatory reforms and the efforts to build a supportive infrastructure did not accompany past trade deals. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आरसीपी के ही कॉन्टेक्स्ट में देखें आप तो if India would have joined RCP, then India would have been compelled to take certain policy and regulatory reforms. So, for example, environmental laws जो होंगे और चाइल्ड लेबर से जुड़े कुछ नॉर्म्स होंगे बहुत ज़्यादा फिर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी लॉज जो होंगे फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके जो लॉज होंगे और ना सिर्फ रेगुलेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज ऑल्सो और along with regulations and policies it is also required to develop proper infrastructure. All that should accompany if we really want to reap the benefits of FTAs. नहीं तो होगा क्या कि दूसरी कंट्रीज में जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर रेगुलेशंस है प्रॉपर पॉलिसीज हैं तो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो वहां पास इन्वेस्ट करेंगे लेकिन वहां के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इस वजह से इंडिया वुड फेस लॉस हियर. ओके आप समझ रहे हैं इस बात को अगर ऐसा है तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दीज ट्रेड डील्स गेटिंग इट. Or Sumit Ganguly's of opinion that this was actually the factor where we could not garner the benefits of free trade agreements. Okay. जैसे for example 1991 के रिफॉर्म्स जो थे और सिमिलर रिफॉर्म्स जो अडॉप्ट किए गए हैं दूसरी कंट्रीज के द्वारा इन द सेक्टर्स ऑफ स्पेशली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वो काम तब करते हैं वो एक्चुअली दे बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय साइमल्टेनियस अटेम्प्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग along with the development of the infrastructure
in the domestic economy, only then they become beneficial. Otherwise they are not beneficial. समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर ये समझ रहे हैं तो ये चीज एफटीएस के केस में ही होती है, नहीं तो एफटीएस से हम प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. ओके. One of the biggest complaints is that absence of safeguard in former FTAs have allowed an unchecked flow of Chinese imports into India. और Sumit Ganguly is of the opinion that one of the biggest complaint क्या थी? Absence of safeguards in former FTAs that allowed unchecked flow of Chinese imports in India. Actually, this was one of the most important contention that Indian economy, Indian industry had with RCEP, और जो आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखा गया था. ओके. और नीति आयोग की इंसिस्टेंस में भी देखा गया था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स have already flooded इंडियन मार्केट. और उसके केस में अगर आप आरसीपी ज्वाइन करते तो जैसा कि मैंने बताया कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है. ओके. इस वजह से यहां पास इसको निगेट किया गया था, इसको अपोज किया गया था. समझ रहे हैं आप? आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पास? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I will wait for your question because it is important that you should know every single aspect that I am discussing. Okay. Yeah, there is a question here. Is RCEP beneficial for India? राहुल कुमार पूछ रहे हैं. Okay, राहुल, RCEP इंडिया के लिए बेनिफिशियल ही है कि नहीं, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं. और इसका मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको पहले प्रोवाइड किया है कि RCEP is beneficial for India for various reasons, but there were various serious concerns जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान में थे, जिसको मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत में बताया. तो हो सकता है शायद आपने डिस्कशन लेट ज्वाइन किया, लेकिन तब भी मैं बता दूं कि इंडिया में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया विल नॉट बी बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग आरसीईपी एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक, फॉर एग्जांपल कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये इसका बहुत अपोजिशन था आरसीईपी को लेके. और ये कहा माना जाता था कि इंडिया इफ इट ज्वाइंस आरसीईपी देन India's domestic copper and aluminum industry will be negatively affected to the extent that it may face devastation also. अच्छा, एक चीज ये थी. दूसरा ये कहा जा रहा था कि इंडिया अगर आरसीपी को ज्वाइन करता है तो आरसीईपी में जो 15 मेंबर्स हैं, अगर इंडिया को एक्सक्लूड करें तो 11 ऑफ द मेंबर्स के साथ ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है. और आरसीईपी में उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ ट्रेड को और ज्यादा लिबरलाइज किया जाना है, तो ये ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइडन हो सकता था. ओके. इस वजह से भी आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया गया. आप डिस्कशन को फॉलो करें, आप दूसरी चीजें भी सीख जाएंगे यहाँ पास. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो अभी तक मैंने डिस्कस किया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. Apart from legacies of the past, both national political parties, the ruling Bharatiya Janata Party and the principal opposition party, the Indian National Congress, despite significant other ideological differences, share a common distrust of free market economics. मतलब according to Sumit Ganguly, both
major parties in India, that is BJP and Congress, they share a common distrust of the free market economics. According to Sumit Ganguly, BJP is against free market economics. This is more of a political statement rather than a disinterested analysis, I would say. Okay, तो मुझे नहीं लगता कि this statement is correct because we have seen Prime Minister Modi negotiating trade deals with various of the countries which were India's favor. Okay, that doesn't mean not joining RCEP or not choosing to become part of this particular group doesn't mean that India is against free market economics. So I wouldn't suggest you to buy this particular argument of Sumit Ganguly. Okay, many of the time these scholars make political statements, and then in those particular statements you do not find much politics and do not find much analysis, but only politics there. Okay, so this is such a statement where I don't think is relevant from your examinations point of view. अगर आपको आंसर लिखना है तो these kind of statements are not going to be helpful. As a result, the BJP has faced hostility from its most significant political rivals when rejecting trade pacts. Okay. In fact, the negative tone of the narrative around past FTAs, many of which were negotiated during Congress-led administration between 2014, might have led the opposition to vehemently oppose RCEP. यहाँ पास कह रहे हैं कि Sumit Ganguly is of the opinion that the negative tone of the narrative around past FTAs. Okay, ये जो पहले से नेगेटिव टोन थी जो उन FTAs के लिए जो पास्ट में कंक्लूड किए गए हैं और जो कांग्रेस लेड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंक्लूड किए गए थे फ्रॉम 2004 टू 2014, उसने अपोजिशन को एक्चुअली मोटिवेट किया होगा कि वो अपोज करे RCEP को भी. So that is the argument here. Okay, apart from the ideological distaste of free trade, there are at least two other compelling reasons for India's intransigence. Okay, तो ideological distaste जो है फ्री ट्रेड के लिए ये सुमित गांगुली के अकॉर्डिंग है. I don't think that this is the reality. Okay, so I won't suggest you to write these kind of statements. लेकिन यहाँ पास क्योंकि पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना होता है इसलिए मैं इन पर्टिकुलर चीजों को स्किप नहीं कर सकता. बट आई विल लीव अ कॉशनरी नोट, okay, a note of caution here that you should not write any particular point which has any political inclination. You should be very much disinterested in your analysis, in your answers. तो वो दो अदर कंपेलिंग रीजंस क्या हैं वो देखिए. First, rapidly dismantling tariff barriers would prove costly for a number of Indian industrial enterprises that are not globally competitive. हाँ, अगर आप tariff barriers डोमेस्टिक सेंस में खत्म करते हैं तो वो क्या होगा? They will not be in favor of those particular Indian industries which are not globally competitive. Simple fact है. मतलब हर एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फेवर करती है और इट विल बी फुलिश ऑन पार्ट ऑफ इंडिया इफ इट डज नॉट केयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, केयर अबाउट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. Unsurprisingly, significant segments of Indian industry, such as those of steel, plastic, copper, aluminium, paper, automobiles, and chemicals, lauded the decision to steer clear of RCEP. स्टील सेक्टर ने प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, पेपर, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स इंक्लूडिंग, हाँ ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी बताया, तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग और बिकमिंग पार्ट ऑफ RCEP. और सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड, इंडियाज पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो beholden to India's vast farm lobby. ओके, अब फार्म लॉबी, अरे यार, India's politicians are not beholden. Indian leadership here is genuinely concerned about Indian farmers. Okay, that should be the reading here.
So what I would suggest here is to replace this particular statement by by any statement which will read something like this: that Indian foreign policy establishment, Indian establishment as a whole, is concerned about Indian farmers, and they are not just beholden to India's vast farm lobby. Okay, many Indian farmers, for legitimate reasons, Ganguly himself is admitting that there are legitimate reasons. तो ये चीज, this is important for your examination point of view. You can use this particular information. ये particular information आपके लिए important है. अगर आप चाहें तो this you can note down. Okay, this and this. And this also. Many Indian farmers, for legitimate reasons, believe that a swift opening of the country's markets to foreign agricultural products could place them at a significant disadvantage. Why? Because we have already seen that in the scenario of increased agriculture production, there are cases or instances of price crash. So that is a kind of double jeopardy for farmers. How? Because increased agriculture production will be the result of hard work. Yes or no? मतलब फार्मर्स जब ज्यादा मेहनत करेंगे तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. बट इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन also leads to price crash of those particular product, and that is why farmers, in case of increased agriculture productions, are not able to attain the proper cost, you can say price, of their produce. तो पहले फार्मर ने खूब सारी मेहनत की जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइस कम हो गई. तो प्राइस कम होने से फार्मर को नुकसान हुआ. तो फार्मर को किस पर्टिकुलर चीज से नुकसान हुआ? अपने हार्ड वर्क से नुकसान हुआ. देखिए उसकी प्रॉब्लम को. और उस केस में अगर इंडिया आरसीपी का हिस्सा बनता है और वहां पास फॉरेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आते हैं, तो ये प्राइस क्रैश के इंस्टांसेस बढ़ेंगे कि कम जाएंगे? प्राइस क्रैश के इंस्टांसेस बढ़ जाएंगे. वहां पास फार्मर को अपने प्रोड्यूस का प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिलेगी और उससे उसका नुकसान होगा. तो जब तक कि हम ये इंश्योर ना कर पाए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस which is the result of the hard work of the farmers in domestic economy, find suitable place, suitable market domestically as well as internationally, till that point we should not allow the competition in agricultural products in domestic economy. So these are the legitimate concerns of Indian farmers, and they have been justifiably adhered to, or have been catered to, or have been considered by your establishment when it decided not to become part of regional comprehensive economic partnership. ओके, समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को? अगर समझ रहे हैं तो चलिए आगे. या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, okay, so many Indian farmers, for legitimate reasons, believe that a swift opening of countries' markets to foreign agriculture products could place them at significant disadvantage. Large-scale reforms could prove costly and even wipe out the small and family-owned farms which dot the country's landscape. Okay, see, understand what happens when we open our economy to the foreign investors and foreign companies, multinational companies and transnational companies. Our domestic economy is going to be in direct competition with these companies which have something called financial muscles. Okay, so financially they are very strong.
Financially, they are very strong, and they are going to compete with our domestic industry, which is dotted with small family-owned farms. Okay, small family-owned farms. And if you talk about the industry as a whole, then you have MSME industry. जीएसटी के बाद ऑलरेडी उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंप्लायंस कॉस्ट वगैरह बढ़ गई है, आप जानते हैं. फिर एमएसएमईज क्या होती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल employment generation in your country. I'm not just talking about the farming sector here. I'm talking about the whole industry and economy, employment generation. Then you also know that MSMEs are critical for encouraging your increasing or contributing to exports also. So if they are going to be hit, then whole economy is going to face the repercussion here. The whole economy is going to be negatively affected. Okay, are you getting it? Now if this is the scenario with whole economy, then how at all one can think that this is not going to be this is not going to leave any negative impact over Indian agriculture, where majority of the farmers in your case are small and marginal. Okay, and the average land holding in your agriculture is less than 1 hectare. इस केस में इनको अगर बड़ी बड़ी कंपनीज से, मोस्ट एफिशिएंट कंपनीज से कंपटीशन होगा तो कहां स्टैंड करेंगे? तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, प्राइस क्रैश के जो इंस्टांसेस हैं, वो तो बढ़ ही जाएंगे बहुत ज्यादा. ओके, मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. Okay, now coming to the next point here. Dairy farmers are particularly opposed to offering market access to foreign producers as they fear competition from competitive and more industrialized dairy industries in Australia and New Zealand. Dairy farmers, तो आपके यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन है, सॉरी मिल्क प्रोडक्शन है, फिर अदर डेयरी आइटम्स है which will include products like paneer, okay, curd, yogurt, buttermilk, and all that. Dairy farmers are particularly opposed to offering market access to foreign producers as they fear competition from competitive and more industrialized dairy industries. अब जैसे for example Australia है, New Zealand है, they have very huge dairy sector and that is very efficient. And I already told you that they have strong capital base. ओके, तो क्वालिटी वाइज ऑल्सो ये बहुत ज्यादा रिच है और कॉस्ट इनकी बहुत कम है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप जानते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से कॉस्ट जो कम हो जाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो these countries have economies of scale in dairy products and that is of higher quality. और वो जब इंडियन मार्केट में आएगा तो आपका अमूल, मदर डेयरी, ये सब कहाँ, ये गायब हो जाएंगे, ये उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे. और आप जानते हैं कि यहाँ पास कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है ना, इस डेयरी फार्मिंग से. ओके, while there is significant opposition to RCEP from agriculture and industry, one would expect India's service sector to advocate for joining the agreement. Okay, हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर जैसा कि मैंने बताया, it is doing well, so it is doing very good, and that is why one would expect that service sector would have supported India for joining RCEP because there we have the mastery. Okay, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में. लेकिन अभी आगे देखिए क्या. According to WTO data, India was world's 8th largest service exporter and 9th largest service trader in 2018.
आप इन पॉइंट्स को नोट करिए, बस यही पॉइंट है जो आपके मतलब दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड एक्चुअली नोट डाउन इन योर नोटबुक। मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि यही सब वैल्यू एडिशन होता है आपके आंसर्स में। मेरा इन कंटेंट को डिस्कस करने का पर्पज यही है कि आपका वैल्यू एडिशन हो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगर डेटा को आप जाते हैं तो इंडिया इज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विस सेक्टर का, और नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडर है सर्विस सेक्टर का। तो नाइन्थ लार्जेस्ट सर्विस ट्रेडर 2018 का WTO का डाटा है। ओके, and is known as a powerhouse in the area of information technology, IT, and business services. So I already know that we are doing very good when it comes to BPO sector, KPO sector, okay, business process outsourcing, knowledge process outsourcing, all that we are doing very good. Okay, so it is expected that service sector would have supported. इंडस्ट्री ने अपोज किया और एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपोज किया। लेकिन क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत अच्छा है, इसलिए वुड हैव सपोर्टेड सपोर्ट फ्रॉम would have expected support from service sector for joining groupings like RCEP. Okay. Any doubt here? Okay. If there is no doubt, then we can move further. Indeed, uh, Indian IT firms have lobbied for greater access to RCEP member country markets. हाँ, IT firms जो है, they have lobbied, मतलब they have lobbied for greater access to RCEP member country markets. Okay, because they are very efficient. लेकिन जिस तरह के आईटी फर्म्स ने लॉबी किया है, वो किस तरह का नेचर ऑफ आईटी एक्सपोर्ट्स है, वो इन्वॉल्व करता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब कि हमारे यहाँ एक्चुअली है क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल्स, फिर नर्सेस, टीचर्स, ओके, इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। और आईटी एक्सपोर्ट्स इस तरह का है। ओके,
और ये अगर आप WTO के नॉर्म्स में देखें तो दीज आर कॉल्ड मोड 4 सर्विसेज। तो इंडिया इंसिस्ट ऑन मोड 4 काइंड ऑफ सर्विसेज। लेकिन यहां पास दिक्कत क्या है? दिक्कत वहां पास ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है कि इंडिया जिस तरह की सर्विसेज के एक्सपोर्ट को चाहता है वहां पास मेंबर कंट्रीज विलिंग नहीं है। तो आईटी फॉर्म्स have accordingly sought concessions relating to restrictive business visa rules, statutory compliance cost, and domestic tax regimes, particularly in China. ओके, अब इसमें दिक्कत क्या आती है वो समझिए आप। Just 1 second and we will start our discussion. ओके, तो हमने देखा कि इंडियन आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और आईटी सेक्टर को हमने एक्सपेक्ट किया है कि आरसीपी जैसे ट्रेड ब्लॉक्स, नॉट ओनली आरसीपी, अब आरसीपी और आरसीपी जैसे ट्रेड ब्लॉक्स को ज्वाइन करने के लिए लॉबी करेगी और उसने किया भी है। लेकिन हम जब आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम किस तरह के आईटी एक्सपोर्ट्स में अच्छे हैं या हम किस तरह के आईटी एक्सपोर्ट्स को चाहते हैं, वो हम आईटी एक्सपोर्ट्स को जिस तरह के आईटी एक्सपोर्ट्स को चाहते हैं दैट इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड WTO, दिस इज मोड 4 काइंड ऑफ सर्विसेज, है ना। IIT firms have accordingly sought concessions relating to restrictive business rule visa rules। मतलब बिजनेस वीजा रूल्स में हम क्या चाहेंगे, ये कंट्री जो आरसीपी के मेंबर्स हैं ये उसमें चेंजेस करें, उसको लिबरलाइज करें। ओके, फिर और क्या चाहेंगे हम कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट जो है उसको कम करें ताकि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं उसको वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उनका आसान हो सके एंड डोमेस्टिक टैक्स रिजीम्स पर्टिकुलरली इन चाइना। और जब इस तरह के रिफॉर्म्स की बात आती है तो उसमें दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि दीज इशूज टेंड टू गेट एम्ब्रॉयड इन डोमेस्टिक इमिग्रेशन एंड रेगुलेटरी पॉलिसी डिबेट्स एंड हैव प्रूवन टू बी पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टू नेगोशिएट। अब जिस सेक्टर में या जिन पर्टिकुलर इंस्टांसेस में इंडिया अच्छा है वहां पास इन कंट्रीज को दिक्कत हो जाती है कि कुछ वो चेंजेस करें। तो आई वुड से दैट दोज पॉलिसी एक्सपर्ट्स which criticize India for not joining trading blocs like RCEP and showcase that India's economic realism is being trumped by nationalist politics should be mindful of this particular fact that the other countries, when they are lagging behind from India in particular sectors, are not able to make any significant changes in domestic politics and domestic policies so that India could also be benefited in those particular sectors where India has comparative advantage. And one such area is IT exports, which specifically involves cross-border movement of professionals. इसमें हमने दूसरी कंट्रीज के द्वारा कोई चेंजेस करते अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में नहीं देखे। जो वो चेंजेस किस नेचर के होंगे, जहां पास उन्हें डोमेस्टिक माइग्रेशन और रेगुलेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे। तो जब वो कंट्रीज चेंज नहीं कर रही हैं तो इंडिया को क्या पड़ी है कि अपने यहाँ बहुत सारा चेंज कर दे। उस हालत में जब इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में एडवर्सली अफेक्ट होगी अगर इंडिया ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। मुझे लगता है कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ होगा। While RCP has promised some service sector liberalization, member countries have not offered concessions on such cross-border movement of professionals, a key interest for India. Okay.
जबकि आरसी पर ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि सर्विस सेक्टर लिबरलाइजेशन, कि सर्विस सेक्टर में वो सर्विस सेक्टर को भी लिबरलाइज करेंगे। सर्विस सेक्टर को लिबरलाइज करने से किसको बेनिफिट होगा, इंडिया को बेनिफिट होगा। इंडिया का इंटरेस्ट किसमें है कि सर्विस सेक्टर को लिबरलाइज करो। लेकिन मेंबर कंट्रीज ने ऐसा कुछ कंसेशन ऑफर नहीं किया है जहां उसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूड, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के केस में यहां पास कंसेशंस नहीं है, यहां नो कंसेशंस बाय आरसीईपी मेंबर्स, नो सिग्निफिकेंट कंसेशंस, है ना, नो सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल कंसेशंस by RCEP members, and this is particularly important for India. Important for India, or this is something where India is interested in. Okay. In other areas of service trade, India is more defensive and is not yet ready to open its market. और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स को छोड़ के अगर दूसरे एरियाज की बात करें तो वहां पास इंडिया डिफेंसिव है, और उन सेक्टर में अगर लिबरलाइजेशन किया भी जाता है तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में उतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पास इंडिया क्या है, डिफेंसिव है, एंड इट इज नॉट येट रेडी टू ओपन मार्केट इन दैट एरियाज ऑफ अदर एरियाज ऑफ सर्विस ट्रेड। ओके, तो यहां कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इफ आरसीईपी मेंबर कंट्रीज वुड हैव सपोर्टेड इंडियाज insistence on opening the borders for Indian professionals, then India would have benefited from joining RCEP, because India's IT professionals, health professionals, teachers, and other kind of professionals would have got or would have secured access to the opportunities abroad, and that would have benefited Indian economy. Okay. E-commerce is one such example in which India's policy framework and lack of a regulatory environment prevents it from opening up its market. तो ई-कॉमर्स भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया था जहां पास इंडिया को प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पास क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो लैक ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, lack of strong domestic policy framework and regulatory capacity. This becomes important reason, most important factor किसके लिए, India is not comfortable in opening its market for e-commerce. Okay, और इन पर्टिकुलर एरियाज में क्या है, इन पर्टिकुलर एरियाज में अदर आरसीईपी मेंबर्स जो हैं वो इमर्ज कर गए हैं लार्ज सर्विस एक्सपोर्टर्स में। ओके, तो ई कॉमर्स कहाँ आएगा, इट विल ऑल्सो बी इन सर्विस सेक्टर। ओके, सो सर्विस सेक्टर एज अ होल में ऐसा नहीं कि इंडिया सर्विस सेक्टर की हर एस्पेक्ट में डोमिनेंस रखता है, यह अच्छा है। सर्विस सेक्टर के उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पास प्रोफेशनल्स रिक्वायरमेंट होती है वहां पास इंडिया के पास एक लार्ज चंक ऑफ वर्क फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है, और अगर उसकी मूवमेंट में फ्रीडम दी जाए दूसरी कंट्रीज के द्वारा तो इंडियन प्रोफेशनल्स वहां पहुंच के उन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं अब्रॉड में
उनको अवेल कर पाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल के यूनियन बजट में भी आपको प्रोविजन देखने को मिले थे, जहां पास स्पेशल ब्रिज कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया था या करने का प्रपोजल था, जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो स्किल सेट्स हैं और फॉरेन कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जो सेट ऑफ स्किल्स की डिमांड है, उसमें जो गैप एग्जिस्ट करता है उसको फिल किया जा सके। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट प्रपोजल इन दिस ईयर्स बजट ऑल्सो। of matlab I'm just trying to highlight the importance of this particular area for India, and that is something that is not being liberalized, or the countries RCEP members are not ready to liberalize their market or their economy in this particular sector where India has very clear comparative advantage. Okay, China, for example, is a prominent exporter of infrastructure, logistics, and technology. ओके, तो चाइना क्या है? ये प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लॉजिस्टिक्स का और टेक्नोलॉजी का, अकॉर्डिंग टू द सेम डब्ल्यूटीओ डाटा। कौन सा सेम डब्ल्यूटीओ डाटा? वो डब्ल्यूटीओ डाटा जिसने इंडिया के सर्विस सेक्टर के अभी बताया कि 2018 का डेटा है ये। चाइना वाज आल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर एक्सपोर्टर इन 2018. Okay, as this analysis of sectoral interest demonstrates, there is no strong constituency in favor of deal, while there are several local ones opposed to it. मतलब कि सर्विस सेक्टर को आप जानते हैं कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर्विस सेक्टर RCEP में ज्वाइन करने के लिए इंडिया के सपोर्ट में होगा, बट इवन दैट सेक्टर फुली that sector as a whole is not efficient enough to become part of such free trade agreement, because in many of the instances India is not a leader. Okay, so in those areas of service sector where movement of professional is required, movement of professionals is required, India has comparative advantage in those sectors and not in all sectors. Okay, तो अपोजिशन कहां से आ रहा है? अपोजिशन बहुत सारे एरिया से आ रहा है, लेकिन सपोर्ट जहां से आ रहा है वो बहुत कम है। और कोई भी ऐसी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी इन फेवर ऑफ डील। ये डील मतलब कैसे कि इंडिया अगर आरसीपी का मेंबर बन जाए, उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन अपोजिशन के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, India's exit from RCEP may have as much to do with economic interest as it does with broader trade strategy and geopolitics. मतलब the argument here which is being made by Swarupa Gupta and Sumit Ganguly is this, that there are certain economic interests and there are other aspects also, for example trade strategy and geopolitics. अब देखते हैं कि वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तो आप देख लिए, ट्रेड स्ट्रेटजी एंड जियोपॉलिटिक्स क्या है, देखते हैं कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। ओके, so the Modi government has sought to reset its approach to free trade agreements by shifting its focus away from Asia to United States, the European Union and United Kingdom. Argument here is this, that the trade strategy that is taking shape under Prime Minister Modi is this, that free trade agreements or approach to free trade agreements is being channelized towards countries like USA, European Union, UK, etc. So there is a shift from Asia to this particular region, that is North America and Western Europe. North America and Western Europe, or this is actually because of the change in trade strategy. समझ रहे हैं इस बात को?
Such a strategy would counter those who argue that leaving the RCEP will isolate India with respect to multilateral trade agreements. And because this particular step should be seen in context of changing trade strategy, where India is concentrating with regard to FTAs more on North American and Western European terms than Asian terms, would also mean a counter to the argument that leaving RCP would also mean the isolation of India. So India is not going to get isolated if it does not join RCEP, because this change should also be seen in terms of the change or shift in trade strategy that is taking place, where India is finding new partners in terms of FTA in form of countries like USA, UK, okay, and various countries under यूरोपियन यूनियन. तो यहाँ पास ऐसा नहीं है कि इंडिया आरसीपी को अगर ज्वाइन नहीं करता तो इंडिया आइसोलेट हो जाएगा. नहीं, इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी इस तरह से चेंज हो रही है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रही है. यहाँ पास इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पास इसका मतलब ये है कि वहां पास एशिया में कंसंट्रेट ना होके वो यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन यहाँ पास कंसंट्रेट कर रहा है. तो डेफिनेटली आइसोलेशन इसका मतलब नहीं होगा. इसका मतलब होगा सेट ऑफ पार्टनर्स डिफरेंट है जहां पास इंडिया फोकस कर रहा है. ओके, आगे चलते हैं. आगे देखिए, however, as past experience has shown, crafting a free trade deal with the United States will not be easy either. Because see, you have seen under Trump administration, we have seen that India has become or India has come closest to the signing of or becoming or coming under the formal alliance with USA. मतलब कि इंडो यूएस रिलेशंस ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और उसके पहले का जो बैकग्राउंड बन रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में इतने ज्यादा चेंज हुए हैं कि ब्रह्मा चलानी ने भी कल, जैसे मैंने आर्टिकल्स में समझाया है, कि ब्रह्मा चलानी का भी कहता था, ये कह रहा था कि इट हैज कम क्लोजेस्ट टू हैविंग अ फॉर्मल अलायंस विद यूएसए. मतलब इंडिया हैज reached to the closest that it has in its whole history in this particular bilateral relationship, कि एक फॉर्मल अलायंस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है. इतने करीब आ गए. लेकिन उसके बाद भी जहां पास इंडिया हैज इमर्ज एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ओके, ऑल 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं. उसके बाद भी ट्रेड डील को लेके कुछ कंक्लूजन नहीं निकला. ओके, आपने नोटिस किया होगा कि उसके बाद भी ट्रेड डील के कॉन्टेक्स्ट में कोई कंक्लूजन अभी नहीं निकला था. ये कहा जा रहा था कि एक कम से कम एक मिनी ट्रेड डील साइन हो सकती है, लेकिन इवन दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कुडंट बी बिकम अ रियलिटी. तो आर्गुमेंट ये है सुमित गांगुली के यहाँ पास कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आरसीईपी में साइन का पार्ट ना बन के इंडिया अगर यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन यहां चेंज कर रहा है, and that should be seen as part of a change in its trade strategy, then a cautionary note is coming from Sumit Gongli, whereby he is saying that free trade deal with countries like USA is not going to be easy because we have not succeeded in cracking or concluding even a mini trade deal with USA, even when India has got closest to USA in its whole history of bilateral relationship. मतलब बहुत ज्यादा करीब आने के बाद भी हम एक मिनी ट्रेड डील भी साइन नहीं कर पाए यूएसए के साथ. ओके, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाना चाहिए कि तब जब हम यूएसए के इतना क्लोज आ गए हैं कि एक फॉर्मल अलायंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है दो कंट्रीज के बीच में, हम मेजर डिफेंस पार्टनर बन गए हैं, हमने 4 के चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है,
जब हमने बी का कंक्लूड किया, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसके बाद भी हम एक मिनी ट्रेड डील साइन करने में भी सक्सेसफुल नहीं रहे. दिस शोज दैट ट्रेड डील और एफटीए विथ यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड डील में है, और उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए सरप्राइजिंग होगा ईयू के साथ. हाँ, ओके. सो विथ यू ऑल्सो वी आर, देर आर वेरियस कंटेंसियस इशूज जो ट्रेड डील जिसकी वजह से नहीं पॉसिबल हो पाई, और कम बेस वही पर्टिकुलर इशूज यूके के साथ भी रहने वाले. ओके. Washington usually demands much higher standards in trade agreements than what is present in RCEP, a requirement that is particularly true of issue areas such as investor-state disputes and intellectual property rights. Okay, so in previous articles also I have discussed that there are various pressing concerns that India has, or sorry, USA has with India's Patent Act. Okay, तो आप जानते हैं there are issues of evergreening of patents, और ये जो है इंडियन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में इसको रोका है. फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है. तो अदर कॉपीराइट्स इशूज, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट्स के इशूज भी बहुत ज्यादा है. फिर इसी तरह इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट्स में आर्बिट्रेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम है. तो बहुत सारे प्रेसिंग इशूज यूएसए के साथ, ईयू के साथ उससे भी कहीं ज्यादा है. मतलब यहाँ पास ईयू इज गोइंग टू फोकस मच मोर ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, मतलब हमारे यहाँ की एनवायरमेंटल लॉज से भी उनको दिक्कत है. फिर चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारे इशूज हैं. और यहाँ पास सुमित गांगुली का एक्चुअली रीजनिंग ये है कि ऑल दोज स्टैंडर्ड्स आर इवन हायर, ओके, देन दोज प्रेजेंट इन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. मतलब in a way it is easier for India to join RCEP if those trade standards are concerned. Okay, ये है आर्गुमेंट यहाँ पास. New Delhi has gambled that by not joining RCEP and building a self-reliant India, it would be in a position to craft future FTAs from position of strength. That is an unlikely scenario. मतलब ये है कि सुमित गांगुली is of the opinion that if India thinks that today if it does not join RCEP, and instead of joining or becoming part of this trade bloc, if it relies on self-reliance and develops its domestic capability to the extent that it requires strength, or it acquires strength to interact and then finally conclude this very deal from a stronger position, that is something which is unlikely to happen. Okay, मतलब मेरा ये है, अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कि सुमित गांगुली का कहना है कि अगर इंडिया ये सोचता है कि आरसीईपी के को ज्वाइन करने के बजाय इंडिया अगर सेल्फ रिलायंस में फोकस करे, और उसका मतलब होगा कि वो अगर डोमेस्टिक सेक्टर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे और उसके बाद वो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन से एफटीएस को क्राफ्ट करे, एफटीए का पार्ट बने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डील करे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा. लेकिन सुमित गांगुली का मानना है कि ऐसा होने की कम संभावना है. दिस इज अनलाइकली टू हैपन. ओके, आगे देखिए. As China's accession to the World Trade Organization demonstrated, joining an existing deal requires paying a higher price in terms of trade concessions. हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक्चुअली हुआ क्या कि आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए
एक जो आर्ग्यूमेंट्स एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा था वो ये था कि if India joins RCEP or becomes part of RCEP in the very initial stage, then it would also be contributing in the formulation of rules and regulations that would govern the business in this particular deal. But if India joins already running और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डील, मतलब अगर इंडिया 5 साल के बाद समझिए ज्वाइन करता है, then India would lose the opportunity to become a contributor in the formulation of rules and regulations. And there, in that particular situation, India will pay a higher price. And this is evident from this particular example where China initially was not a member of WTO, but when it joined WTO, it could not contribute in the formulation of rules and norms and regulations there. Okay. Further, not joining RCEP would robbed India of the chances to play a role in setting norms in new seas in trade such as e-commerce, और स्पेशली ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर में जो रूल्स फ्रेम किए जाएंगे वो भी मतलब एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट वही है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि पहले फॉर एग्जांपल चाइना जब पार्ट शुरू से होता है इसका जो ट्रेड कंसेशंस दिए उसने WTO में, हो सकता है वो शुरू में ना होते, तो बाद में जो इंडिया को कंसेशंस देने पड़ जाएंगे RCEP का मेंबर बनने के लिए वो हो सकता है हायर, तो उसकी प्राइस हायर, तो कंसेशंस हो सकता है ज्यादा देने पड़ जाए बाद में अगर ज्वाइन किया जाए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फ्रेम किए जाएंगे, नॉर्म्स जो सेट किए जाएंगे, वो भी इंडिया उनका भी पार्ट नहीं बन पाएगा। ओके। Building an economically strong India requires reforming New Delhi's policy and regulatory environment and revisiting the negotiating past agreements. Staying out of new ones is not the answer. अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो अकॉर्डिंग टू सुमित गांगुली दैट विल रिक्वायर रिफॉर्मिंग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड रिविजिटिंग एंड रीनेगोशिएटिंग पास्ट एग्रीमेंट्स। तो पास्ट जो FTA साइन हुए हैं उनको रिविजिट करो। ओके, दैट इज वन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ओके, तो FTAs को पहले एग्जिस्टिंग FTAs को रिवाइज करो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छा होना चाहिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ये चीज जो है इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएगी। ओके, अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो दीज आर द सजेशंस। तो मैं कहूंगा कि यू शुड टेक नोट ऑफ दीज पर्टिकुलर सजेशंस विच इज कमिंग फ्रॉम सुमित गांगुली। ठीक है। He is of the opinion that staying out of new ones is not the answer. That is not the solution of the problem. क्या एग्जिस्टिंग जो ब्लॉक्स हैं, एग्जिस्टिंग जो FTAs हैं उनको रीनेगोशिएट करें अगर उसमें प्रॉब्लम है। ओके, ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कि इंडिया जो ब्लॉक्स हैं उनसे अपने आप को दूर रखे। दैट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम हियर। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। अगला है द ताइवान इंडिया मिलिट्री अलायंस। तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियाज रिलेशन विथ ताइवान, मतलब चेंजिंग। यहाँ पास आपको चाइना का भी कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, लेकिन मैं उसके पहले चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पास इस क्वेश्चन को पूछ सकें। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क देम, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी यहाँ पास खत्म किया है एंड द एनालिसिस वाज प्रोवाइडेड बाय सुमित गांगुली एंड श्रुपा गुप्ता।
So if you have any doubt here, you can ask me. Okay. सो दिस, अगर हम समराइज करें इसमें, तो सुमित गांगुली और रमा गुप्ता का एक्चुअली यहाँ पास एम्फेसिस ये था कि इंडिया आरसीपी का मेंबर क्यों नहीं बना। उसमें आर्गुमेंट उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि इंडिया डिड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ आरसीपी बिकॉज ऑफ द अपोजिशन दैट केम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। ओके, अब इंडिया की अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया इज इकोनॉमिकली स्ट्रांग इन सर्विस सेक्टर। तो ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था कि सर्विस सेक्टर वुड हैव सपोर्टेड और लॉबीड फॉर ज्वाइनिंग सच अ ग्रुप, बट इवन सर्विस सेक्टर डिड नॉट सपोर्ट इंडिया ज्वाइनिंग आरसीईपी। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी अगर हम देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स में हम जहां पास दूसरों से ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज रखते हैं, वो क्या है, वो कौन सा सेक्टर है? वो है आईटी प्रोफेशनल्स के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का। और जब आईटी प्रोफेशनल के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के केस में है, हम निगोशिएट करते हैं कंट्रीज के साथ, तो उसका फायदा क्या होता है? उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली इशू क्या आ जाता है कि उन कंट्रीज को अपने डोमेस्टिक लॉज, डोमेस्टिक पॉलिसीज में, माइग्रेशंस वगैरह के इशूज में चेंजेस करने के लिए, मतलब वो प्रॉब्लमेटिक होता है और वो पर्टिकुलर कंसेशन हमें नहीं मिलता उन कंट्रीज के द्वारा। और दूसरे सेक्टर्स में एक्चुअली हम देखते हैं कि दूसरी इकोनॉमीज जैसे चाइना जैसी इकोनॉमीज इंडिया से भी अच्छा कर रही हैं सर्विस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो जिस सर्विस सेक्टर के जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम अच्छे हैं और जहां हमें वाकई बेनिफिट मिल सकता है, उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में हमें फ्रीडम नहीं मिलती, कंसेंसस नहीं मिलता। और सर्विस सेक्टर के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वगैरह, उनमें अगर हम लिबरलाइज करेंगे तो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर भी घाटे में जाएगा, मतलब वो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। ओके, इसीलिए सुमित गांगुली ने फाइनली ये कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट नहीं करती जो लॉबी करे इंडिया में आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अपोज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सॉल्यूशंस जो ऑफर करते हैं सुमित गांगुली इस कॉन्टेक्स्ट में, आरसीईपी और सिमिलर ट्रेड डीड्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये ज्यादा सही होगा कि न्यू दिल्ली कौन सा मेजर अडॉप्ट करे कि अपने यहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रांग हो, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए और जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज करे और उनको रीनिगोशिएट करे। क्योंकि ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स को चूज ना करना या उन्हें रिजेक्ट करना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम का? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो रीनिगोशिएट एंड रिवाइज द एफटीएस। ओके, स्ट्रेंथन योर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड डू प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, सो ये हम एक, मतलब दिस इज द टेक अवे पॉइंट हियर। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप यू आर फ्री टू आस्क। ओके, then we'll move towards next issue. Okay, and that is the Taiwan India Military Alliance. देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। हाँ, Taiwan Happy National Day October 10. Read the poster congratulating Taiwan on 109th National Day. तो October 10 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है ताइवान के लिए। अब क्यों है, अभी हम जानेंगे इसके बारे में।
So this is actually the poster. Okay, मिल्क टी अलायंस, ये सारे के सारे बहुत कैची टर्म्स हैं। अगर आप PSIR के स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट करें। ये कहाँ पे ये पोस्टर्स कहाँ पास लगाए गए थे पता है आपको? चाइनीज एम्बेसी में, RK पुरम, चाइनीज एम्बेसी में, न्यू दिल्ली में, बाय इंडियाज रूलिंग BJP स्पोक्सपर्सन तजिंदर पाल सिंह बग्गा। ओके, ताइवान हैप्पी। तो अक्टूबर 10 की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले मैं आपको इसको बता दूं। ओके, हैप्पी नेशनल डे अक्टूबर 10 की इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज दैट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को ताइवान बोलते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज ताइवान, celebrates its national day on October 10. Okay, this holiday is also called double 10 day. Double 10 day जैसे अक्टूबर क्या है? अक्टूबर is the 10th month, है ना? तो अक्टूबर is the 10th month and 10th October will be double 10, double 10 day or double 10th day, referring to the 10th day of the 10th month. That is in 1911 when Wuchang uprising began. Okay, began. The uprising began in the city of Wuchang in 1911 and triggered the Shanghai Revolution. Shanghai Revolution. Wuchang uprising, Shanghai Revolution. अगर आप नहीं जानते तो ये this is the information that you need to know. Leading to the end of Qing dynasty and 2 millennia of dynasty rule in China. कब? 1911 में। किस तारीख को? 10 अक्टूबर को। तो अक्टूबर is the 10th month and 10 October would be double 10th. So that is why it is called double 10th day. And it is very important for Taiwan. Okay. On January 1st, 1912, the Republic of China was established, but after the end of World War II, communists took control over the mainland China and the government of ROC had to relocate to Taiwan. तो ये आप जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश्ड कब? 1 जनवरी 1912 को। लेकिन व्हाट सेट द स्टेज फॉर दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट? दैट वाज वुचांग अपराइजिंग इन द ईयर 1912। ओके, फिर 1 जनवरी 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ था, बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्युनिस्ट टुक द कंट्रोल। और तब से लेके अभी तक किसका कंट्रोल है चाइना में? कम्युनिस्ट का। एंड ओवर द मेन लैंड चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोलते हैं? ताइवान को बोलते हैं। हैड टू रेलोकेट टू ताइवान। ओके, अब हम फिर से अपने आर्टिकल में आ जाते हैं। यहाँ पास जिस चीज को हम डिस्कस करने के लिए, जिस चीज को समझने के लिए यहाँ पास आए हुए, ताइवान हैप्पी नेशनल डे अक्टूबर 10 को मनाया जाता है। अभी आपने क्यों मनाया जाता है वो आपने देखा। रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोलते हैं? ताइवान को। और जिसे हम चाइना बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? ताइवान। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो दीज काइंड ऑफ पोस्टर्स वर पुट बाय BJP वर्कर्स in Chinese embassy in New Delhi. Okay,
Even though they were soon taken down, images of the signs had already gone viral on Twitter. तो ये आपने देखा होगा कि ये images बहुत ट्विटर में highlighted रही हैं. ओके, पिछले मंथ की बात कर रहा हूं मैं. They were joined by a meme tweeted by Indian netizens in support of Taiwan. आप जानते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच में टेंशंस हैं. ओके, titled Milk Tea Alliance, a reference to an earlier solidarity movement uniting pro-democracy netizens in Taiwan, Thailand and Hong Kong. The meme, अच्छा आप जानते हैं कि China is not a democracy, but there are various pro-democracy elements which are present in Taiwan, और उससे चाइना को हमेशा दिक्कत रहती है ना. तो titled Milk Tea Alliance, a reference to an earlier solidarity movement uniting pro-democracy netizens in Taiwan, Thailand and Hong Kong. The meme showed Taiwan's President Tsai Ing-wen and India's Prime Minister Narendra Modi toasting each other with bubble tea and Indian spice tea. This represented a huge humiliation for Chinese Communist Party, and Chinese embassy in New Delhi had specifically issued a diktat to Indian media a few days before Taiwan's double tenth day, instructing them on how to report on Taiwan, most importantly asking them not to violate one China policy. वन चाइना पॉलिसी को अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो मतलब ये है कि चाइना इंसिस्ट ऑन कंट्रीज having diplomatic relations with People's Republic of China not to recognize Taiwan as a separate state. Okay, and to recognize People's Republic of China as the legitimate authority to rule over Taiwan. ठीक है, ये चीज है. मतलब this is the shortest description of one China policy that I can do in this particular case in order to give you a background to understand this particular issue. Okay. As expected, this diktat sparked a backlash on social media and has a so-called streisand effect, elevating the very discourse on China was trying to suppress. तो वह क्या कि चाइना ने जब इस चीज को इंसिस्ट किया कि यहाँ से जो प्लेकार्ड्स हैं हटाए जाएं, ये जो पोस्टर्स हैं हटाए जाएं, तो उसी पर्टिकुलर चीज ने उस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया. एक्चुअली ये India's celebratory posters attracted attention from several circles, including the Taiwan government. Okay. Tsai thanked the Indian people for their blessings and support. Tsai कौन है? Taiwanese leader. आपने अभी यहाँ देखा ना? Taiwan's president Tsai Ing-wen. उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है. Tsai thanked the Indian people for their blessings and support, and on the day the posters went up. Taiwan's invite to US, Xiao Peking tweeted, "Ha! Wow! What a milk tea alliance!" Okay. Indeed, the growing number of articles on Taiwan written by Indian think tanks, scholars, politicians, and journalists this year, as well as the shift in attitude within the Modi government, demonstrate the potential development of Taiwan-India Milk Tea Alliance. This is actually the issue here, which I want to focus on, and this is actually relevant for your exam also. मतलब PSIR के कॉन्टेक्स्ट में जो रेलेवेंट जो इशू है और जिसकी वजह से मैंने ये डिस्कस करने के लिए सेलेक्ट किया है वो ये है. ओके. On the one hand, the outside world has witnessed Taiwan's excellent role in public diplomacy, including its early control of COVID-19 and success in stabilizing its economy against the negative impacts of the outbreak. Yes, Taiwan was very much successful there. And it was successful not by any repressive force that is visible in People's Republic of China, but in
Republic of China, that is Taiwan. This was actually done by adopting the democratic way. Okay, तो चाइना ने भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन चाइना का आप जानते हैं कि देर इज a great deal of force involved here by the state. लेकिन यहाँ पास ताइवान ने जो किया that was done democratically, okay? Including its early control of COVID-19. This prompted Taiwan's international friends to strongly support its participation in World Health Assembly as an observer. Okay, and this is something which is going to be disliked by China. On the one hand, the outside world has witnessed Taiwan's excellent role in public diplomacy, including its early control of COVID-19 access. This is actually the repetition of this very point. The island had been denied permission to attend the WHO's annual meetings since 2016 at the behest of Beijing. मैंने कहा ना कि चाइना इसको अपोज करेगा. ओके, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है, किसको बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं ताइवान. तो चाइना को क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी. ओके, highlighting has this island, the island has been denied permission to attend WHO's annual meeting since 2016 at the behest of Beijing, highlighting how power politics can influence international organizations to exclude weaker actors. और यहाँ weaker actors कौन है? WHA मतलब ताइवान, जो जिसको अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए एज एन ऑब्जर्वर इनवाइट किया गया. ओके, this has succeeded in shaping media opinion and raising the level of ethical and political support for Taiwan within India. तो ये चीज जो जिस बीजिंग के बेहस्ट में, ये चाइना के कहने में ताइवान को नहीं या ताइवान को एक्सक्लूड किया जा रहा था WHA के एनुअल मीटिंग से, उसे जब फाइनली पार्टिसिपेटिंग के लिए इनवाइट किया गया तो दैट this succeeded in shaping media opinion and raising the level of ethical and political support for Taiwan within India. तो ethical support तो एक्चुअली पहले से भी था. कुछ ऐसे इवेंट्स जो है पॉलिटिकल सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ देखा है बीजेपी वर्कर ने वो सारे प्लेकार्ड पोस्टर्स वगैरह चाइनीज एम्बेसी में लगा दिए थे. तो ये दिस इज काइंड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट दैट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. ओके, New Delhi, on the other hand, has its own conflict with China over border issues. That is something which you already know, that in all three sectors, that is eastern sector, middle sector, western sector में conflict है. और अभी गलवान वैली का conflict तो एक तरह से ongoing conflict है. This has led to many voices in India's strategic circles calling for deeper ties with Taiwan. Okay. The July appointment by the Modi government of top career diplomat Joint Secretary Gaurangal Das, the former head of US Division, India's Ministry of External Affairs, as its new envoy to Taiwan is seen as a further evidence of India's emphasis on Taiwan's role. तो मतलब जुलाई में एक अपॉइंटमेंट हुआ था बाय मोदी गवर्नमेंट ऑफ टॉप करियर डिप्लोमेट जॉइंट सेक्रेटरी गुरुरंगल दास, द फॉर्मर हेड ऑफ यूएस डिवीजन in India's Ministry of External Affairs as its new envoy to Taiwan. ये क्या देखा जाता था? This was seen as a further evidence of India's emphasis on Taiwan's role. ठीक है? The following analysis analyzes the factor and future trends of India's friendship with Taiwan from a strategic and economic perspective. Give me 1 minute and I will resume the discussion.
Okay, let us start now. Okay, the strategic perspective. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. India's Act East policy and Taiwan's new southbound policy have the potential for strategic docking. Very, very important for your exam. Okay. India's Act East policy and Taiwan's new southbound policy. Act East policy of India and new southbound policy of ताइवान. मतलब यहाँ पास स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस मिलेगा. एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? दैट इज recasted version of look east policy of India, which was shaped in the initial years of the decade of 90s. Okay, which implored India to focus on Southeast Asian countries. And now, under Prime Minister Modi, this policy acquired strategic dimension also. Okay, along with increase in number of countries in focus, and that has taken shape in form of Act East policy. ठीक है. तो पहले क्या था कि पहले ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल रिलेशंस. बाद में स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी यहाँ पास शामिल हो चुका है किसमें? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में. और नंबर ऑफ कंट्रीज उनमें भी हमने रीच को बढ़ाया है. Okay, so this is actually the crux of Act East policy here. And Taiwan's new southbound policy have the potential for strategic docking, मतलब strategic convergence. Act East policy promises to strengthen strategic, economic, and diplomatic interactions in Southeast Asia and Asia Pacific. While new southbound policy of Taiwan, वो क्या करती है? That aims to enhance cooperation and exchange between Taiwan and 18 countries in Southeast Asia and Australia. Australasia का मतलब क्या होगा? Australia and Asia continent. Okay, Australasia मतलब Australia and Asian continent. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक में फोकस है इसका. किस कॉन्टेक्स्ट में? स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक. और न्यू साउथबाउंड पॉलिसी ऑफ ताइवान, उसका फोकस क्या है? इकोनॉमिक इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज बिटवीन ताइवान एंड 18 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नोटबुक लेके बैठे और इसको नोट करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ओके, आगे देखिए. बोथ पॉलिसीज एम टू इंक्रीज रीजनल इन्फ्लुएंस and gain political and economic benefits from their partners in the region. Okay, so this is something that you know in case of Act East policy is also true in case of new southbound policy of Taiwan. Okay, that is the aim here is to gain more and more regional influence and political and economic benefits from partners. Okay, in addition, a liberal democratic alliance led by the US to protect common values is forming. Groups like Quadrilateral Security Dialogue, आप जानते हैं क्वाड के बारे में. A minilateral strategic forum between US, Japan, Australia and India.
So this is actually a grouping of four democracies which have major stakes in Indo-Pacific region. Indo-Pacific region. And Quad is being seen as a response to China's increasing economic and military power. It is muscle increasing muscle flexing and aggressive foreign policy postures in areas like South China Sea and East China Sea also. Okay, not only that, China's checkered diplomacy, also called checkbook diplomacy, also called debt trap diplomacy, also called uh, and its insistence in keeping its claims regardless of them being in violation with international norms. All those factors have contributed in formation of groupings like Quad, where countries like US, Japan, Australia, and India are forming a group in order to constrain and contain China. Okay. In this atmosphere, Taiwan, which has a geographically strategic position and shares democratic values with those countries, is naturally seen as a potential ally. Okay, the Quad, as I told you, is a grouping of four democracies, and Taiwan, to a good extent, is also a democratic force. Okay, a democratic voice. The Taiwan card has long been in play in India's political, diplomatic, and strategic discussions regarding China. What is the meaning of Taiwan card? I told you China, that is People's Republic of China, that is a China that we know, insist on one China policy. Okay, if the playing of Taiwan card would mean that we are saying that we have an option open to revise our policy towards China in context of one China policy. That is actually the meaning of Taiwan card here. Especially at a time when Sino-Indian relations are precarious, words China considers sensitive, for example Taiwan or Tibet, naturally come to the fore. मतलब एक ऐसे टाइम है when Sino-Indian relations are precarious, they are not good. Words China considers sensitive, that is for example Taiwan or Tibet, naturally come to the fore. मतलब ताइवान और तिब्बत ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको चाइना सेंसिटिव मानता है और ये नेचुरली सामने आते हैं, सरफेस में आ जाते हैं. ठीक है. As the border issue resurfaces, as is witnessed in case of say Ladakh standoff, India is seeking opportunities to balance and challenge China, and so the Taiwan card is once again emerging as a strategic bargaining chip. ओके okay? मतलब यहाँ पास है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मतलब ये है कि जैसे चाइना जो है, चाइना का बेलिजरेंट अप्रोच जो अडॉप्ट किया जा रहा है उसके द्वारा गलवान वैली में. ओके, तो हमारे पास तिब्बत और ताइवान दो ऐसे कार्ड हैं जिनको हम प्ले कर सकते हैं या जो सामने आ जाते हैं ऐसे केसेस में जहां पास हम एक तरह का प्रेशर बना सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि तुमने ज्यादा ये बेलिजरेंट अप्रोच अपना रिवाइज नहीं किया, देन वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू वन चाइना स्टैंड दैट वी ऑलरेडी हैव. So we can go on promoting Taiwanese independence or more autonomy to Taiwan and Tibet. हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, इस तरह की बातें इमर्ज होने लगती हैं ऑलरेडी. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर सेइंग एज स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग चिप. आप जानिए कि चाइना जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है अपने यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कंटेन करने में, क्योंकि 21st सेंचुरी में इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड एनी कंट्री वुड कम under the lens of global community if it adopts or resorts if it adopts a very repressive major state force against any democratic voice. It calls for a sanction by global community, and powers like China will also be averse to that kind of step.
to adopt. Okay, so if democratic voices are emerging in places like Taiwan, that is something that is going to make China uncomfortable. And if we start using those particular cards as our bargaining chip, that is again going to trouble China even more. Okay, so that is what article is hinting at in this particular analysis. Economic perspective देखिए, Modi is currently placing increasing emphasis on attaining self-reliance as a crucial aim of Indian economic policy, and the country is struggling with economic consequences of COVID-19 pandemic. Okay, तो आप जानते हैं कि for example COVID-19 pandemic में, as I told you, and in today's news also, India has technically entered into something called recession because of negative growth rate in two consecutive quarters. Okay, in two consecutive quarters. तो एक्चुअली रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? रिसेशन की यही टेक्निकल डेफिनेशन है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट रही तो क्या हुआ? दैट इज अ केस ऑफ रिसेशन. और इंडिया इस टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर जाए तो इंडिया हैज इंटर्ड इनटू रिसेशन एंड दैट इज कॉज्ड बाय द स्टॉल्ड डिमांड इन इंडस्ट्री एंड आल्सो फ्रॉम कंज्यूमर्स. ओके, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है, डिमांड भी खत्म हो गई है बिकॉज पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इनकम एंड मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर. और उस केस में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो पहले से थी या इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में जो लैकनॉस थे वो बहुत सरफेस में आ गए इस पैंडेमिक के दौरान. तो उसमें जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है वहां पास इंडिया के द्वारा, वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर यहाँ पास फोकस किया जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत की सब आप जानते हैं. ओके, hence the Modi government is urgently seeking economically attractive alternative partners in the region. ओके, तो रीजन में जो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव पार्टनर है, दैट इज समथिंग मोदी गवर्नमेंट इज एक्चुअली सर्चिंग अबाउट और इज सीकिंग टू हैव कॉपरेशन विद. Taiwan as a leading power in the field of science and technology and semiconductor manufacturing is considered a reliable substitute to China. Okay, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ताइवान कैन एक्चुअली रिप्लेस, क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना से जो इंपोर्ट है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन एंड मशीनरी अप्लायंसेस. ओके, मैंने आपको अमितेंदु पाटिल के आर्टिकल में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हम चाइना से डिकपल होने की अगर सोचे भी तो क्यों नहीं हो सकते. तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ताइवान कैन इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव स्पेशली इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स, और जहां पास हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से. Moreover, India's ban on Chinese apps and its exclusion of Huawei's from its 5G network over security fears also opened the door for Taiwan to further deepen its presence in the Indian telecom industry. ठीक है, तो आप देख रहे हैं that all ongoing attempt by the Indian government in order to sanction China economically has also called for banning of Chinese apps, और फिर 5G नेटवर्क जो है हुआवे की तरफ से उसको भी एक्सक्लूड किया गया है ओवर सिक्योरिटी फियर्स. और ये ऑल दैट इज एक्चुअली गिविंग अवे फॉर ताइवान टू फर्दर डिपेंड प्रेजेंस इन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री. तो ताइवान भी ऑलरेडी बहुत अच्छा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में. तो इफ वी रिप्लेस चाइना बाय ताइवान, दैट इज समथिंग दैट अगेन गोइंग टू बी helpful for India in its effort to decouple from it. Okay. Conversely, India with its dipping GDP needs to project itself as a hassle-free manufacturing hub for such projects. Okay, तो ये this was something which was visible in your budget also. यहाँ पास हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेस किया गया है, प्रपोजल्स रखे गए. तो अगर हम यहाँ पास इसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, so that is going to be really helpful for India's GDP. Okay, which will allow New Delhi to support its economy and pursue self-reliance
under Digital India and Make India campaigns. So the argument here is this, that if we could convert India into a manufacturing hub of all these products, then it is going to help India in realizing its objective of Digital India and Make in India, and will finally contribute to GDP also. Taiwan is thus seen as an alternative reliable partner for India's consumer and business needs. I'm sorry. इस सेंस में क्या है कि ताइवान एक अल्टरनेटिव रिलायबल पार्टनर माना जा रहा है विच कैन मीट इंडियाज कंज्यूमर एंड बिजनेस नीड्स. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. If this is clear, then let's move forward. The future of Taiwan-India relation. The future of Taiwan-India relation. This year, there are various signs that Taiwan-India relations have taken a further step forward. What are those signs? Let us analyze them. In addition to China factor, Taiwan's economic, technological and medical advantages serve as catalyst. ठीक है? In addition to China factor, Taiwan's economic, technological and medical advantages serve as. So Taiwan economic condition is good. Technologically, in the area of science and technology, it is very efficient and very innovative. And it also has as over in medical field also. However, China's influence on India cannot be overlooked in the discussion on whether India will continue to build deeper diplomatic ties with Taiwan. However, China's influence on India cannot be overlooked in the discussion on whether India will continue to build deeper diplomatic ties with Taiwan. मतलब China historically, if you see, has been able to pressurize India not to give much importance to Taiwan. ओके, मतलब हिस्टोरिकली क्या है, ये सक्सेसफुल रहा है इंडिया को प्रेशराइज करने में कि ताइवान के साथ अपने कॉपरेशन, अपनी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग ना करे इंडिया. समझे आप इस बात को? और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पास चाइना फैक्टर या चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया में इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा ओवरलुक नहीं किया जा सकता. At present, India may play the Taiwan card to balance and challenge China. Yet, once Sino-Indian relations stabilize, there is a chance that India will dilute the Taiwan issue. मतलब यहाँ पास आर्ग्यूमेंट ये है कि this Taiwan card is more tactical than I'm sorry, strategic. इसका मतलब क्या हुआ कि it is only because of the recent skirmishes that we witnessed between India and China that India or Indian domestic front and Indian establishment, the governmental establishment, is thinking of playing Taiwan card, or is thinking of bringing Taiwan into center, to the extent that it is planning to replace China from Taiwan in various economic policies and various bilateral trade issues. But that is not going to be a long-term phenomena. That means that is not going to be a strategic step. The argument is that once relation gets stabilized, then China will again easily replace Taiwan. मतलब यहाँ पास ये कहा जा रहा है. Okay, there are also no signs in Taiwan that Tsai government is seeking to build formal relations with India in the short term. हाँ, actually ताइवान की अपनी कुछ मजबूरी है. ओके, तो ताइवान एक्चुअली कंप्लीटली फ्री तो नहीं है चाइना से. चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पास रहता है ताइवान में. तो साई गवर्नमेंट जो है ताइवान में, ताइवानीज प्रेसिडेंट में साई की बात कर रहे हैं यहाँ पास,
that has not shown very extrovert or very clear indications to build formal ties with India, even in short term. Okay, as I stated in her 2020 National Day address, in addressing cross-strait relations, we will not act rashly. We are committed to upholding cross-strait stability. मतलब यहाँ पास ये है कि Sai is not being very emphatic, or you can say very direct, in expressing any newfound interest in developing relations with India directly. So Sai has been very cautious in expressing the desire to have a closer cooperation with India, and that leaves India very few choices to go with this kind of closer cooperation with Taiwan so that it could become a potential alternative to China, even in those sectors where it is doing much better than China, or equally good if you compare it with China. This shows that Tsai administration does not want to undermine stability across Taiwan Strait by developing relations with other countries in face of Chinese opposition. That is what I mean. That you can't expect Taiwan government under Tsai to go out of bound to have any kind of radically different diplomatic step or diplomatic effort to to bring about any closer cooperation with countries like India, which might irrate in China, which might trouble China, or which might attract Chinese aggression. That is something that Taiwanese government is not going to do. Okay, so that is why it is being said that Taiwan card is more of a tactical nature rather than a strategic one. Currently, both countries can be seen to be very careful in their dealings with China. Both countries कौन जैसे for example if you consider Taiwan to be a different country, then Taiwan and India दोनों बहुत ज़्यादा careful है. Okay, therefore a possible way forward for Taiwan and India would be to deepen ties without pinching China too much. यहाँ पास the suggestion that is coming in this particular instance is this, that if at all both countries want to have a cooperation with each other, that is Taiwan and India, then they should go with such kind of cooperation with this particular view and with this particular intention, that it might or it should not irritate China too much. It should not trouble China too much. Okay. Nevertheless, since 2010, there has been no joint statement between Chinese and Indian leaders reaffirming a commitment to one China principle. मतलब पिछले एक डिकेड में, for a decade or so, there has been no reiteration of one China policy from Indian side. That means what? That this leaves a door open for India to revise its one China policy. Or revise its instance or its stake or its stand with respect to one China policy. Okay. So in that sense, it really leaves a door open for making it a bargaining chip in our strategic engagement with China. Getting it or not? If you have any question, you can ask me. This is generally considered to be due to India's dissatisfaction with China's attitude towards Kashmir. So we have seen that Chinese have adopted, you can say, a very revanchist and a land grabbing approach in Kashmir, where they have went ahead with their BRI project, Belt Road Initiative, okay, and have cooperated with countries like Pakistan in especially a very problematic project called China-Pakistan Economic Corridor,
in the northern reaches of Jammu Kashmir region, which troubled India a lot. In previous instances, we have also seen China using the or providing stubbled visas to the people belonging to Kashmir region. And all those policies have been very much troubling to India. And that is why India is well justified in playing Taiwan card or Tibet card in order to pressurize China to toe India's line in case of Kashmir. समझ रहे हैं आप? Arvind Gupta, a former Indian Deputy National Security Advisor, also argued that India should take a dynamic approach beyond one China statement and that there should be a reciprocity in all areas between two countries. बस जहां इस तरह की चीजें, जहां इस तरह के स्टेटमेंट आए, यही PSIR में आपको आंसर्स में आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन के लिए मदद करते हैं. यहाँ पर दिस इज अ गुड स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज इन योर आंसर in order to add value in your answer, in order to support your argument. So he is Arvind Gupta. Who is Arvind Gupta? A former Indian Deputy National Security Advisor. What he is saying, that India should take a dynamic approach beyond one China statement, and that there should be a reciprocity in all areas between two countries. मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना जब चाहे कश्मीर में कोई भी स्टैंड ले सकता है. अगर ऐसा है तो इंडिया को भी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वो हमेशा वन चाइना स्टेटमेंट की रट लगाए रहे. मतलब कि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी जो है, या वन चाइना पॉलिसी में जो उसका स्टैंड है, उसको वो रिवाइज कर सकता है, या कम से कम इसकी धमकी तो दे सकता है कि हम भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे अगर आप सीपैक को अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो पाकिस्तान के साथ. अरविंद गुप्ता का ओपिनियन ये है. ओके, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच ऐड वैल्यू टू योर आंसर. Please note it down if you have access to any notepad. To some extent, this reflects India's attitude towards one China principle, giving Taiwan some flexibility in the future development of bilateral relations. Okay, तो कुछ एक्सटेंट तक ये क्या कर रहा है, ये एक एटीट्यूड दिखाता है इंडिया का किसकी तरफ, वन चाइना प्रिंसिपल की तरफ. Giving Taiwan some flexibility in the future development of bilateral relations. मतलब ताइवान को फ्लेक्सिबिलिटी देना, ये एक एटीट्यूड दिखा रहा है किसका, इंडिया का, वन चाइना प्रिंसिपल की तरफ. यहाँ पास a revision in India's stand with respect to one China principle is in the offing, or you can say is possible in near future. Are you getting it? Okay. If you don't get it, if you have any question, you are free to answer. You are free to ask your doubts. Okay. All your questions will be answered. चलिए आगे चलते हैं. It should also be noted that regional context may also change as a result of US presidential election in November. Actually, this very article was published before the US election. Okay, so now we know that Biden has come to acquire US presidency and he will start chairing presidential chair from 20th of January. Okay, so this is something that we can safely leave. And stances of Quad's other members towards China, Japan, Australia are more circumspect towards Beijing. Okay, so we can safely skip this particular part. With regional stability in mind, India's support for Taipei may not be strong enough to allow it to politically recognize Taiwan as a country. मतलब कि एक्चुअली क्या है कि देर आर वेरियस stakes. If India goes for support of Taipei to the extent that it politically recognizes Taiwan as a country, then it means raising of stakes, okay, in the neighborhood that might irritate China to a
गुड एक्सटेंट। चाइना बहुत ज्यादा ट्रबलसम फील कर सकता है अगर इंडिया ऐसा स्टेप लेता है। ओके, और वो रीजन में स्टेबिलिटी को दिक्कत करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट फॉर ताइपेई मे नॉट बी स्ट्रांग एनफ। Okay, that is why it is thought, or it is being suggested, that it would be immature to think that in near future India is going to support Taipei to the extent that it acknowledges Taiwan as a separate country. That is something that is not going to happen in near future, considering India's stakes in regional stability. Okay, let us move forward. Nonetheless, India's current big moves to publicly counter China demonstrates its long-standing dissatisfaction and frustration, highlighting that this is the best time for India and Taiwan to work together on shared economic and strategic interest. Okay, मतलब ये कहा जा रहा है कि इंडिया के बिग मूव्स, फॉर एग्जांपल बैनिंग ऑफ एप्स, फिर 5G इशू में हुआवे को एंट्री न मिलना, all that are big moves which have been used publicly to counter China. All that demonstrate its long-standing dissatisfaction. मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, ये इंडिया का चाइना के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन है जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हाईलाइट्स दैट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया एंड ताइवान टू वर्क टुगेदर ऑन शेयर्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ओके, दिस विल ले द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ बोथ साइड्स। और इससे क्या होगा? This will actually be a foundation, building of the foundation okay, a foundation from where further cooperation between India and Taiwan will be possible. Okay, so I think everything is clear now. और आप समझ रहे हैं कि ताइवान किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पास इसमें ये माना जा रहा है कि दिस कैन ऑल्सो बिकम अ फैक्टर फॉर द रिवीजन ऑफ वन चाइना प्रिंसिपल और इंडिया स्टैंड विथ वन चाइना प्रिंसिपल that is or that may also undergo revision. Okay, so I think this is clear now. If you have any question, you are welcome to ask it, okay, so that I could resolve your doubt. चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं. Okay, I think there is a question here. Manvi Gupta. Okay. Sir, what can India do to ensure that its moves such as banning of apps etc. benefit the Indian company? Okay, Manvi Gupta. आपका कहना ये है कि इंडिया क्या कर सकता है, what can India do so that its moves like banning of apps, okay, you mean Chinese apps, benefits its economy? Simply, India can concentrate in domestic economy, whereby it promotes domestic manufacturing, okay, improves its raw material availability. It's not only about apps, no, it's about, if your question is about economy as a whole, then this is the answer. Raw material availability from different sources, then strengthening of regulatory environment, okay, which will ensure what? Greater industrial production, okay, especially those industries from where those industries which are not capable of competition
with Chinese companies. And what are those industries? In the area of electronics and machinery appliances, then fertilizers. ये हमने अमितेंद्र पाटिल का पिछली बार जो एनालाइज की थी, डिस्कस की थी, उसमें ये सारे पॉइंट्स थे। जस्ट प्रीवियस मैराथन डिस्कशन में हमने इसकी चीज को किया है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, इन सब में बहुत स्ट्रांगली अगर हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो हम चाइना का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव डोमेस्टिक सेल्स में डेवलप कर सकते हैं। ओके, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम अपनी इकोनॉमी में किन सेक्टर्स को प्रमोट करें जहां हम चाइना के एक वायबल अल्टरनेटिव गेन कर सकते हैं, तो दिस इज द आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज आस्क इट। So what I understood from your statement was this, that you want to know that which sectors of Indian economy should be focused so that we could find a better alternative of China domestically. Okay, so this is actually the answer. Actually, I have discussed this very issue in the previous marathon. Okay, that I took just yesterday. ओके, चलिए आगे चलते हैं। So this was all about Taiwan China, India China military alliance. So here in this particular article you have seen that the kind of skirmishes that we have developed with China and increasing tensions that are visible along the border. Taiwan card can be a very effective tactical tool, if not a strategic one, to pressurize China, or at least to employ this particular card as a strategic bargaining chip with China. But a scholar is of the opinion that any kind of close cooperation between these two countries, to the extent that it makes China troublesome, that is not in the offing. And a scholar was also of the opinion that once India-China relations are stabilized, then Taiwan is again going to be in the background in India's strategic calculus, so far as this particular region is concerned. Okay, तो ये एक स्पेशल मतलब एक एसेंस था आर्ग्यूमेंट का, जिसको इस तरह से समराइज किया जा सकता है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। Okay, next is SIDMAX, India, Singapore, Thailand complete second trilateral maritime exercise. This is also a new issue, a recent one, and the analysis is by Rajeshwari Pillai Rajagopalan. Appeared in the Diplomat magazine. She also writes in Observer Research Foundation, a very esteemed think tank in India. तो इसमें भी बहुत अच्छी एनालिसिस आपको मिलेगी और एक बहुत रीसेंट इशू है, तो इसको हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि वहाँ पास राजेश्वरी पिल्लाई राजगोपालन का एनालिसिस क्या है। ओके, okay, so let us start. India, Singapore and Thailand recently concluded their trilateral naval exercise, SIDMAX 20. Okay, SIDMAX 20. This is the second edition of SIDMAX, hosted by the Republic of Singapore Navy from November 21-22. The exercise was held in the Andaman Sea. Okay,
This represents a growing number of naval engagements that India has been holding with various navies, including those in Southeast Asia. So I think this is the information. I don't think that you have any problem here in understanding this. These are the factual information. Again, a background information. Analysis will start after a while. Okay, so this represents what? Growing number of naval engagements that India has been holding with various navies, including those in Southeast Asia. But it also indicates the growing willingness of regional navies to look to India as a maritime partner. ओके, तो आप सिंपेक्स वगैरह का भी जानते थे, अभी शिटमैक्स के बारे में हम देख रहे हैं. As well as the increasing comfort level in coming together at the regional level rather than look to just US in dealing with rising China. Okay, so if you see these countries here, India, Singapore, Thailand, if they are coming together in such kind of naval engagement, that means what? India has other options also. It is not just relying on Quad or countries which are there in Quad. It is not just about USA and Japan. India can cooperate and go for naval engagement with these countries also. Okay. So that is why it is being said that it also indicates the growing willingness of regional navies to look India as a maritime partner. And this kind of perception is immensely useful for India because India has been seen as an outside power by मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक्चुअली कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नोशन ये रहा है कि इंडिया इज एन आउटसाइड पावर. Such kind of naval engagement is going to remove these kind of perceptions, and this is something that is required. So after Act East policy, you can say हमने वियतनाम वगैरह के साथ बहुत अच्छे से वो एंगेजमेंट की है और उसमें बाद में हमने सिंगापुर, थाईलैंड इनसे भी एक्सटेंसिव रिलेशन स्टैब्लिश किया है. और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने कुछ हद तक इस परसेप्शन में को रिमूव करने, इस परसेप्शन को दूर करने में मदद मिली है. किस परसेप्शन को? जहां पास इंडिया को एक आउटसाइड पावर माना जाता था. किनके द्वारा? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा. ओके. Okay. So it also indicates growing willingness of regional navies to look to India as a maritime partner, as well as the increasing comfort level in coming together at regional level, rather than look to just the US in dealing with a rising China. Okay. So rising China, militaristic China, aggressive China, a China that is involved in muscle flexing and aggressive foreign policy, that is something which is problematic to almost all Southeast Asian countries and not only to India. Okay, that these exercises were held in spite of the challenges imposed by COVID-19 pandemic suggests the importance attached by the three navies to those exercises and also the seriousness of the threats they mutually face. Okay.
मतलब कि पैंडेमिक के टाइम ही ये एक्सरसाइजेस हुई हैं, इस तरह के नवल एंगेजमेंट्स हो रही हैं। ये उनकी इम्पोर्टेंस जो अटैच की जा रही है ये इन कंट्रीज के द्वारा, उसको दिखाता है। और उनकी सीरियसनेस को दिखाता है। किस सीरियसनेस को? सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट दैट दे आर फेसिंग, दैट इज इमर्जिंग चाइना, एग्रेसिव चाइना, मिलिटरिस्टिक चाइना, ओके, लैंड ग्रैबिंग चाइना, revisionist China. This particular trilateral exercise is relatively new. Yeah, the first edition was held in Almansi only last year. So this is the second edition that took place. Indian Prime Minister Narendra Modi had announced the trilateral exercise at his keynote address at 2018 Shangri-La Dialogue in Singapore. तो आप जानते हैं सांग्री-ला डायलॉग होता है, और इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं फॉलो करते तो फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल in different countries attend this particular dialogue, and there we see a kind of a projection of foreign policies that different states in the region are going to adopt. Okay, at the inaugural edition of the exercise, the Indian Navy was represented by guided missile destroyer INS Ranveer, missile corvette INS Kora, offshore patrol vessel Sumedha, and P-8Y long-range maritime reconnaissance aircraft. Okay, Indian Ministry of Defence said that the second edition of the exercise was being conducted as a non-contact at sea only exercise in view of COVID-19 pandemic. मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हुआ है यहाँ पर. Okay, emphasizing that this as a big indicative of the growing synergy, coordination, and cooperation in the maritime domain between three friendly navies and maritime neighbors, that is India, Thailand, Singapore. Okay. The statement added that the three navies would engage in a series of exercises including naval maneuvers, surface warfare exercises, and weapon fighting. The stated goals of these exercises were to strengthen the mutual interoperability and to understand and assimilate the best practices between these three navies. Actually, exercises का emphasis क्या होता है? इस तरह के एक्सरसाइजेस का मेन पर्पज होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी को गार्नर करना, गेन करना, एक्वायर करना और उसे प्रमोट करना, ताकि व्हेन दे विल रिक्वायर टू फाइट एनी कॉमन एनिमी, देन देयर विल बी interoperability. Okay, then they will be we will be able to combine their advantages, their forces in the most efficient manner. That is actually the मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज होता है. और इसका एक परसेप्शन बिल्डिंग में भी इसका यूज होता है. परसेप्शन बिल्डिंग मतलब कि इफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर एक्सरसाइजिंग, okay, are indulging themselves in any military exercise, that means what? They are sharing a bond which can be capitalized by them against any particular potential enemy. In this case, it can be China. Okay. The Indian Navy ships participating in the exercise include indigenously built ASW anti-submarine warfare corvette Komorta and missile corvette Karmuk. तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
यहाँ के एनालिसिस वाले पार्ट में आप फोकस करें, जहाँ पास ये दिखाया जा रहा है कि कैसे चाइना के खिलाफ ये एक रिजॉल्व को दिखाता है, एक इंक्रीजिंग सिमेट्री जो बन रही है यहाँ पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्ट और इंडिया में, विच इज ऑल्सो यू कैन से अ रिजल्ट ऑफ द Act East policy that India has been pursuing under Prime Minister Modi. That is something that you should focus on. Okay, ये इस तरह के डिटेल्स आप भूल भी जाते हैं. Singapore sent its formidable class frigates Intrepid and the Endeavour, an endurance class LST landing ship tank. Okay, Thailand was represented by Chow Pharaklai class frigate, the Karburi. Explaining the importance of the exercise, the commander of SIGMEX 20 Task Force and commanding officer of RSS Intrepid, Lieutenant Colonel O. Jongbu said that the SIGMEX serves as a useful exercise for three like-minded navies to enhance our interoperability in maritime operations. And this is something which these kind of information are actually relevant for your exam. तो आप इससे याद रखिएगा. इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको मदद करते हैं अपने आंसर्स को लिखने में. So what this lieutenant is actually expressing is this, that these kind of exercises like SITMAX serves as a useful exercise for three like-minded navies, India, Thailand, Singapore, to enhance our interoperability in maritime operations. The ability to execute and conduct these operations together is a testament to the long-standing ties and trust that we have established with one another. Okay. After the SITMAX concluded, the Singapore Navy joined the Indian Navy for a bilateral naval exercises SIMBAX. ये तो आप जानते हैं कि SIMBAX कैसे हम करते हैं in the Bay of Bengal from November 25 to November 27. Okay, the military exercises with Singapore and Thailand also demonstrate the increasingly strategic nature of engagements that India has developed with the countries in Southeast Asia. Okay, that is in the offing from the time that we have started pursuing Act East policy. Okay. तो यहाँ पास एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक्चुअली फोकस कहाँ था? स्ट्रैटेजिक डायमेंशन में, along with economic engagement and diplomatic engagement, strategic dimension was very evident and very much prominent in this particular area. Okay, next, from a look east policy in the early 1990s, देखिए वहीं पास फोकस जाएगा, which itself was not very successful. Why? Because it concentrated only on economic engagement, that focused on economic issues. To an Act East policy initiated by Prime Minister Modi in 2014, bilateral relations in the region as well as the regional context have been transformative. Okay, so they have completely, Act East policy in a way has completely transformed India's relation or India's engagement with its extended Southeast Asian neighborhood. Okay, even though these exercises have been shortened on account of the pandemic, हाँ इस तरह की exercise में अभी कमी आई है pandemic की वजह से. The fact that the navies of the three countries decided to go ahead with the exercise is a clear reflection of the similarity of views between India, Singapore, and Thailand. Actually, this shows the resolve. Okay, this shows the resolve of these countries. Okay, and their seriousness, as we have just seen, in facing their common threat that is emanating from a country like China. This could mean that the three navies may continue to strengthen these exercises in terms of scope and maneuvers, expansion of geographical areas of their exercises, and greater sophistication in terms of their overall objectives of SEDMAX.
Singapore, of course, has been one of India's strongest security partner in the region. Important point. Defense relations between the two began with the signing of their first defense cooperation agreement in 2003. Okay, another very important information. Defense cooperation agreement in 2003. इससे क्या है यहाँ पास है सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में important. Since then the two have signed several more agreements for greater military to military interactions. That means what? Greater to military interaction क्या करता है ये? This shows strategic engagement. Okay, this shows that both are strategic partners. Given that Singapore is a small island nation, India has been a good partner, offering training to the Singapore Armed Forces at its military training facilities like the Air Force and artillery firing range. तो आप जानते हैं कि India has been providing this kind of assistance to Singapore from a long period of time. Okay, and in that sense, they have been sharing this strategic engagement since a long period of time. Their main naval interaction Simpex has continued now for more than 20 years. Yeah, मैंने जैसा कि बताया Simpex नया है लेकिन Simpex पुराना है. Okay, the importance of freedom of navigation in open seas, in line with UNCLOS, that is United Nations Convention on Law of the Sea, as well as respect for international law, have been often repeated themes in the bilateral discussion. Okay. India-Thailand bilateral relations are not as deep, but they have also picked up space over the last decade. मतलब सिंगापुर के साथ देखें तो एक्चुअली है क्या ना कि why they are like-minded navies. Just stress on this particular point. इस particular point में आप focus करें कि I want to analyze it slightly more than the analysis that has been provided here. The question here is this, that why and how these are like-minded navies? Because all these nations share respect and reverence for international laws. Okay, and these are something which are completely violated and flagrantly flouted by China. मतलब चाइना लगातार इंटरनेशनल लॉ को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है. अनक्लोज के लॉ के तहत उसे साउथ चाइना सी में उस तरह के प्रोहिबिशंस नहीं इम्पोज करने चाहिए थे जैसा वो ट्राई कर रहा था. लेकिन इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर ये कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं और उनके लिए उन पर्टिकुलर नॉर्म्स को लेके उनका पर्टिकुलर मतलब रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. इसके लिए इंडिया और थाईलैंड इस दिस केस में मैं बता रहा हूँ along with other partners. For example, Quad is also one grouping which is very much in line with India's intention, India's choice to have full respect for international law. Here in this case we are analyzing SITMEX, and that is why I'm using these countries or naming these countries, that India, Thailand, Singapore. They are very much in line with India's thought of all these navies share equal respect and concern for international law and have a stake in rule-based international order. That is something which China has been opposing or is not giving any reverence to this particular view. Okay. India-Thailand bilateral relations are not as deep, okay, but they have also picked up pace over the last decade with a number of high-level political visits and institutional mechanisms.
इसीलिए सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर के साथ इस तरह की इंगेजमेंट बहुत पुरानी है, लेकिन थाईलैंड उस कॉन्टेक्स्ट में एक नया प्लेयर है। ओके, और इस तरह से थाईलैंड के साथ जो एंगेजमेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में इस लेवल की, वो इंडिया के साथ नहीं है, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। These include, that is, engagement with Thailand include periodic foreign office consultations, India-Thailand joint commission meetings, which are held at the foreign minister level, and defense cooperation mechanisms that have seen military exercises between the armies and the air force of these two countries. So these are of recent origin, and that shows increasing cooperation and engagement with between India and Thailand. Okay. In addition to the annual Army and Air Force exercises, the two countries, that is India and Thailand, also hold bi-annual coordinated maritime patrolling by the two navies. Okay. Given the slowly growing tension between Thailand and China, it is likely that Thailand will reach out to countries such as India to hedge matlab build or reduce risk. Build fences to reduce risk. मतलब रिस्क कम करने के लिए फेंसेस को क्रिएट करना, हैज अगेंस्ट पॉसिबल लॉन्गर टर्म ट्रबल रिलेशंस विद बीजिंग. Okay, so because of, again I told you that this actually shows the countries resolve, or the resolve of these countries and the seriousness of these countries to face a common threat perception that emanates from China. Okay, that emanates from China. आगे देखिए, such moves are also backed by growing popular opposition to Chinese high-handedness across the region. Okay, so across the region, Chinese high-handedness means its militaristic tendencies. Okay, aggressive postures. The Milk Tea Alliance, we just studied about it, which grew from online squabbles. ये आपने ट्विटर वगैरह में जैसा अभी हमने किया, अगर आपने फॉलो किया शुरू से इस डिस्कशन को तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी. The Milk Tea Alliance, which grew from online squabbles between Chinese and Thai netizens, represents deep-seated reservations about the relationship among Thai people. Okay, the so-called Milk Tea Alliance is also, अब देखिए थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर ये पहले से एग्जिस्ट करता था. So this was actually the alliance between among democratic forces, pro-democratic voices of Hong Kong, Taiwan, Singapore. Okay, the so-called Milk Tea Alliance also is quickly expanded with support pouring in from other countries such as Taiwan, the Philippines, Hong Kong. Okay, China's growing economic might and its aggressive military power have provided India, Singapore, and Thailand strategic rationale to combine their efforts. This is actually, if you have studied realist theory of IR, then you have seen in the analysis of Kenneth Waltz and also John Mortimer, before that Morgenthau, that balance of power is something that states needs to or attempts to acquire, and if any power acquires a revisionist ambitions, in our case it is China, and develops disproportionate power in its favor, we see a kind of combination of countries pooling their efforts to bring a kind of balance with that revisionist power. Okay, तो यहाँ पास रियलिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर जो हंस मर्गेंथू और उसके बाद जॉन मेयरशेवर, केनेथ वॉल्स वगैरह के बाद के राइटिंग्स में डेवलप हुई, उसको बहुत क्लियर केस में आप यहाँ पास विटनेस कर रहे हैं, जहाँ पास चाइना एक डिस्प्रपोर्शनेट पावर जब एक्वायर कर रहा है, तो एक बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करे उस रीजन में, तो आप छोटी कंट्रीज को या लेस कैपेबल कंट्रीज को अपनी कैपेबिलिटी को पूल करते यहाँ देख रहे हैं, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट कर सके. You have studied that in realist theory of IR. This is very much visible in our case here.
So this is something that what is happening. Realist theory of fire in full display under this context, where China is a country which has disproportionately increased its power in its favor. Okay, and the rift that exists between its brute power, the military power, and other countries in its neighborhood is very wide. So the balance of power will be the result of conglomeration of different states combining their strategies, their power, their military strength, and then finally fighting against this very relentless power in a combined manner. Okay, and this is what we have seen happening in this Chinese neighborhood. I think this is clear now. तो इन्हीं इवेंट्स को आप एक्चुअली फर्क कहाँ जाता है कि आप जनरल स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस में इसी में फर्क करते हैं. आपको चीज़ों को थ्योरी के टर्म्स में या थ्योरी के लेंस से देखना है. वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करती है, आपको आपके विजन को ज़्यादा क्लियर बनाती है. ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर डिस्कशन ऑन ऑन स्ट्रिक्ट मैक्स. और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ पास पूछना तो आप पूछ सकते हैं. ओके, सो I conclude my discussion. If you have any doubts here, you can ask me. You are welcome to ask your questions. I will address them. Okay, Manvi Gupta का क्वेश्चन है, सर व्हाट विल इंडिया लूज इफ इट जॉइंस आरसीईपी एट अ लेटर डेट. ओके, तो मानवी अगर आपने क्लास को अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था आपको कि आरसीईपी अगर इंडिया ज्वाइन करता है, अगर अभी इनिशियल स्टेज में ज्वाइन करता है, तो इंडिया रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करने वाले टेबल का उस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट बन पाए. एक्चुअली जब ये एनालिसिस हो रही थी तो मैंने आपको सुमित गांगुली का ओपिनियन बताया था कि सुमित गांगुली ने वहां पास चाइना का एग्जांपल दिया था कि चाइना ने जब डब्ल्यूटीओ को लेटर स्टेजेस में ज्वाइन किया, देन द प्राइस और द कॉस्ट of joining any particular such group at a later date is very high. Why? Because then that particular grouping is not going to provide you much concessions that it will be able to offer in its initial stages. Okay, तो ये पर्टिकुलर चीज जो चाइना के केस में डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में सही थी, वही पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट यहाँ इंडिया के केस में आरसीपी के कॉन्टेक्स्ट में सही होगा कि when at we are not joining this particular grouping at this particular stage, and when we will join it later on, then we will not be provided with the kind of concessions that can be provided in the initial stage. So the price of joining this particular grouping at a later date will be high. Okay, second point है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें सर्विसेज सेक्टर के बहुत सारे एरियाज में हमें कुछ परेशानीज है. परेशानी इस तरह से है कि वहाँ की उनके जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हम इनिशियली आरसीईपी को ज्वाइन करते तो हम अपने उन कंसर्न्स को एड्रेस करवा सकते थे कंबाइंड फॉर्म में, जब हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करनी बॉडी का पार्ट बनते. लेकिन बाद में जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पास इंडिया की कंसर्न्स, अगर हम शुरुआत में ही उससे ज्वाइन करते तो डेफिनेटली उसको हम एड्रेस कर पाते.
ठीक है, लेकिन बाद में अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो वो कंसर्न्स को हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी फ्रेम किए जा चुके होंगे। ओके। अच्छा, फिर मानवी का दूसरा क्वेश्चन है कि सर, कंसिडरिंग द कोविड पैंडमिक, was it wise decision for India to join not join RCEP since economy has already gone in recession? Okay, actually, I told you in my discussion only that the very decision not to join RCEP was guided by this very understanding that it is not going to be in India's interest. Why it is not going to be in India's interest? Because Niti Aayog and various other bodies, for example, India Inc. and various of the industries, for example, copper industry, aluminum industry, paper industry, all of these industries were having very strong voice against RCEP. क्यों है क्या कि वहां पास हम 11 ऑफ द 15 मेंबर जो ब्लॉक है उसमें उनमें 11 ऑफ द कंट्रीज के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। आरसीईपी क्या करता? आरसीईपी वुड हैव कॉल्ड फॉर फर्दर लिबरलाइजेशन इन द ट्रेड, एंड दैट यू माइट think very easily that would have increased trade deficit with these countries here. Okay, so that is in no way going to benefit India economically in immediate terms. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली होते हैं, जैसे मैंने आपको सुमित गांगुली के आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखे थे जब उन्होंने कहा कि बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की आप बात करें तो वहाँ पास कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जैसे कि कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे चीपर कॉस्ट में, इंडियन इंडस्ट्रीज को एक इनपुट रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उससे, लेकिन जो कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होगी। और हमने वहाँ पास फार्मिंग सेक्टर में जो लॉसेस हो सकते हैं, इंडस्ट्री को जो लॉसेस हो सकते हैं उसको देखा। हमने ये भी देखा कि समित गांगुली का कहना था कि बिकॉज इंडिया इज वेरी गुड इन सर्विस सेक्टर, then we would have, section of scholars and experts expected service sector to be lobbying for joining RCEP, but even in that particular sector we are very good when it comes to IT professionals, and we would have an advantageous position if RCEP member states would have allowed for cross-border movement of IT professionals. But we have seen that that particular thing was not allowed by these countries, or the concessions that were required by these countries were not being made. And there also, in other sectors of services, other countries are equally capable, sometimes even more capable than India. ओके, तो मतलब कंक्लूजन यहाँ ये निकल रहा था कि अगर आप 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखें तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं था, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं था, और सर्विस सेक्टर जो डोमिनेंट सेक्टर है इंडिया में और जिसमें हम वाकई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर के भी कई सारे फेसेट्स में जिस फेसेट में इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इंडिया को वाकई बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर ऑफ मूवमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, और वो आरसीईपी पेपर स्टेट्स के द्वारा उसमें कंसेशन नहीं दिया जा रहा था, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए उस सेक्टर में भी प्रॉब्लम होती। ओके, जब आरसीईपी मेंबर्स द्वारा सर्विस सेक्टर में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को इजी बना दिया जाए, बिजनेस वीजास को इजी बना दिया जाए, तब उस सेक्टर में हमें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं कराई जा रही थी इसके द्वारा, आरसीईपी मेंबर स्टेट्स के द्वारा। ओके, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई विल वेट 30 seconds for any of your question. Okay, and if all your questions are resolved, I will conclude my discussion. कोई और क्वेश्चन हो आपको तो यू आर वेलकम टू आस्क। अगर मेरे आंसर्स में भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड आई कंक्लूड माई डिस्कशन and we'll continue our marathon discussion tomorrow also, and I will again pick the most recent issues to discuss. Okay,
और ये आपके आंसर्स में बहुत अच्छा वैलिडेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।